हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग कैप चैनल आपण मानकु स्वागत। आज हम पावर सिस्टम ऊपर किसी एमसीक्यू डिस्कशन करबा। चलंतु एबे क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, आज द लोड फैक्टर ऑफ ए पावर प्लांट इंक्रीजेस। से कुछ गोटे लोड फैक्टर द पावर प्लांट रो कोन हला बढ़िला, देन द कॉस्ट पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी जनरेटेड। से कोन कुछ पावर प्लांट रे जदी लोड फैक्टर बढ़िला ताले कॉस्ट पावर पर किलोवाट आवर एनर्जी जो आमर प्रोड्यूस होउची ताले कोन होबो, बढ़िबो। ऑप्शन देला इंक्रीजेस ना डिक्रीजेस ना मे इंक्रीज और डिक्रीज किंबा रिमेन्स द सेम। सब मन रखिए जेतले हमर लोड फैक्टर इंक्रीज करिवो प्लांट के ये रे, से टाइम रे हमर कॉस्ट कोन हिजबो एतरे किलोवाट आवर ऊपर कमी जीवो। टोटल ऑप्शन बी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट problematic देला, a thermal generating station has installed capacity of 15 megawatt and supplies a daily load of 10 megawatt for 12 hour। फास्ट जो 12 आवर रोचे 10 मेगावाट रो लोड दिया जाउची, सप्लाई दिया जाउची। देन नेक्स्ट 12 घंटा हमरो 5 वाट रो 5 मेगावाट रो लोड दिया जाउची। तो पचार तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द स्टेशन। तले हम तो सॉल्व करिवा। तले प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हम जानिए बोले दुटा जिंस जानियार अछि हमरो। गोटेला हमरो एक्चुअल केते एनर्जी सिटी प्रोड्यूस होउची, देन हैला मैक्सिमम एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस। जोटा मैक्सिमम हमरो एनर्जी प्रोड्यूस केते एठी हे परिबो 15 मेगावाट रो, किंतु सेठी से कला फास्ट 12 घंटा 10 मेगावाट सप्लाई करा होउची। तो नेक्स्ट जो 12 घंटा रहउची 5 मेगावाट रो सप्लाई करा होउची पावर। तले तर हम बाहर करिया तले कोन होबो आरो। तले एक्चुअल हमर जो एनर्जी प्रोड्यूस केते हला, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइड बाय हमर मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस है। तले एक्चुअल हमर केते हला, फास्ट चलु 12 घंटा 10 मेगावाट रे, तले 12 गुणन 10 टोटल हम दिनटा केते 24 घंटा ना गोटे दिन, प्लस 5 गुणन 12 डिवाइड बाय मैक्सिमम केते के 15 मेगावाट मान 24 घंटा 15 इंटू 24। तले हम सॉल्व कर देले कोन होबो 12 2 6 120 15 दुले 30। तले केते 120 30 सॉरी 12 2 6 120 एला 5 मिनट बदल 12 5 60 एला केते होबो हमर 120 ए जीवो 60 एला 180 डिवाइड बाय 15 गुणन 24 है 360। तले 180 बाय 360 है केते 1/2 1/2 टाइम केते लिख परिबा 0.5। तले कैपेसिटी फैक्टर केते बाहरला, प्लांट कैपेसिटी 0.5। तले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी वाट ना जूल पर सेकेंड ना वाट पर सेकेंड। तो राइट आंसर है जूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। एन अल्टरनेटर कन्वर्ट्स, अल्टरनेटर कौन कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल ना मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल ना साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है जो हमर अल्टरनेटर कौन करे, मैकेनिकल एनर्जी टू हमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू डैश किलो कैलोरी। समस्त जानते पे। तो राइट आंसर है इट्स ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द मोस्ट क्लीन पावर प्लांट इज, सब क्लीन पावर प्लांट कोटा ना स्टीम पावर प्लांट ना डीजल ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक ना न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो राइट आंसर है
hydroelectric power plant. The next question, the major heat loss in a steam power station occurs in क्यों थरे major अधिक परिमाण heat loss को गोटे power station न कोडे अधिक major heat loss हुए steam power plant रे boiler रे ना condenser रे ना superheater रे ना none of the above. The right answer is condenser रे कारण सेठी heat exchange हुए तेणु से अधिक परिमाण मेजर परिमाण हमर हीट लॉस हुए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर स्टेशन इज एबल. थर्मल एफिशिएंसी हमर गोटे स्टीम पावर स्टेशन न मैक्सिमम केते थाए 28 ना 69% ना 80% ना 75%. द राइट आंसर इज 28%. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, the overall efficiency of a steam power station is overall efficiency कौन हो equal to thermal efficiency into कौन हो mechanical ना electrical ना prime mover efficiency ना none of the above. सब मन के overall efficiency कला thermal efficiency गुणन हमरो electrical efficiency. टोटल ऑप्शन बी. then next question को जिबा, the cheapest plant in operation and maintenance. कोटा हम चीपेस्ट प्लांट आ ऑपरेशन पे मेंटेनेंस भी इधर कम ऑप्शन देला स्टीम न्यूक्लियर हाइड्रोइलेक्ट्रिक डीजल पावर प्लांट. राइट आंसर इज हमरो हाइड्रोइलेक्ट्रिक टोटल ऑप्शन सी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, डीजल प्लांट्स इन पावर प्लांट्स आर यूज्ड एज ए बेस लोड ना पीक लोड ना स्टैंड बाय ना नॉन ऑफ द अबव. डीजल पावर प्लांट मन जो डीजल प्लांट हमर सब स्टैंड बाय रे थाए केतले इमरजेंसी पड़ला बोले संगे संगे सेत्र पावर प्रोड्यूस हो पर बाकी अलग टाइम लागिवो. द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन डैश प्लांट. क्यों प्लांट रे हमर फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम in डैश plant nuclear ना diesel ना steam power plant ना hydroelectric. the right answer is हमरो hydroelectric. then next question को जिबा, question देला the thermal efficiency and electrical efficiency of a steam power station देला thermal efficiency दे देला के 30% आउ steam power station आर देला इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी दे देला केते 92% स्पीड. तो ओवरऑल एफिशिएंसी हम ओवरऑल एफिशिएंसी कोन जानले ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी गुणन इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी. तला हमर थर्मल एफिशिएंसी केते देला एठी 30%. तल तक हम लिख परिया केते 0.30 गुणन एटा 92% इलेक्ट्रिकल. तो केते लिख परिया हम 0.92. तापर तो हम एफिशिएंसी रे हम परसेंटेज रे कन्वर्ट कर दवा कैलकुलेशन पे हो जियो. तले गुणी देला हमर केते हिजो 0.276 0.30 into 0.92 कलो 0.2 तो परसेंटेज लिखले into 100 कर दवा केते हो 27.6%. डाला ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, नेक्स्ट देला स्टीम पावर स्टेशन हैज एन ओवरऑल एफिशिएंसी देला केते 20% एंड 0.6 kg ऑफ कोल एफिशिएंसी दे देला. तापर कहला 0.6 kg ऑफ कोल बर्न पर किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड. तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल पचार जे हमको एठी. ताहले एठी हम डाटा कोन देला एफिशिएंसी दे देला आउ केते कोयला जल्ला बोल दे देला 0.6 kg. ताहले हम अज्यूम करिबा लेट x नेले कोटा हमर कैलोरीफिक वैल्यू पय. ताहले हीट प्रोड्यूस बाय हमर जो जळिला केते 0.6 kg रो जो कोयला जळिला ताले हीट प्रोड्यूस बाय जो हमर 0.6 kg बा 600 ग्राम रो कोयला ताले केते कैलोरी हमर सेठी बर्न हमर केते कैलोरी एठी हेतिबो प्रोड्यूस हेतिबो हीट प्रोड्यूस हेतिबो इक्वल टू हमर 0.06
x कैलोरी हम नहीं आज्यूम कले फास्ट लेट नेले x भी तो कैलोरी भी वैल्यू फुएल तो 0.6 पे हम जो जलिला तले हम सेटा केते हो 0.6x ए जीवो किलो कैलोरी देन हम जानि चंदी को 1 kWh किलोवाट आवर इक्वल टू केते हमरो 860 किलो कैलोरी ताले ओवरऑल हमर एफिशिएंसी केते होबो भारिबो ओवरऑल एफिशिएंसी हमर इक्वल टू हम जानि चंदी केते हमर इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन हीट डिवाइड बाय हीट ऑफ कंबशन ताले हमर ओवरऑल एफिशिएंसी दे देछि केते 20% ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइड बाय हीट ऑफ कंबशन केते हमर जळिला जल्ले हमर केते किलो कैलोरी जो बाहरला हमर आजुम कल n देला केते 0.2 इक्वल टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन हीट यूनिट केते हमर एटी देला 860 गोटे किलोवाट रे हमर हम जानछन 860 किलो कैलोरी तले हमर इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन हीट केते हला 860 डिवाइड बाय हीट ऑफ कंबशन हमर केते कहि दिले सपोज 0.6 केजी जलला माने 0.6 किलो कैलोरी रो सेठी एनर्जी बाहरला हीट प्रोड्यूस होला तले एटी केते हिजो 0.6x तले ako हम सॉल्व कर देले x हमर भारी आसीबो सेटा हमर केते किलो कैलोरी हम सॉल्व कर देले x पळे आसीबो 7166 तले राइट आंसर मोर हिजो ऑप्शन ए को आउथरे हम कहि दोछि फास्ट हम कोन करले अज्यूम करले कोटा कोना कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूल अज्यूम करले हम ताको x लेट x भी तो कैलोरी वैल्यू ऑफ द फ्यूल देन हीट प्रोड्यूस हम जो कोयला जो जलिला केते जो 600 ग्राम जलला सेतर केते किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होला लेट हम देख धरले केते 600 ग्राम रो जलला इक्वल टू 0.66 किलो कैलोरी फ्यूल सॉरी हमर एटी हीट प्रोड्यूस होला देन हम जानि चंदी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 860 किलो कैलोरी देन हमर एफिशिएंसी रो ओवरऑल एफिशिएंसी रो फार्मूला होला इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइड बाय हीट इन कंबशन तले हमर एफिशिएंसी होला 0.2 और ये हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट केते हला 860 किलो कैलोरी डिवाइड बाय 0.6x तले हम x बाहर जीवो इटा सॉल्व कर देले देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट हम देला ए थर्मल पावर स्टेशन हैज ए बॉयलर एफिशिएंसी ऑफ 85% एंड टरबाइन एफिशिएंसी देला केते 90% ताले द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द स्टेशन इज केते ताले हमर एटी कोन देला बॉयलर एफिशिएंसी देला केते 85 और टरबाइन एफिशिएंसी देला 90 तो हम जानछन पचरला कोन थर्मल एफिशिएंसी तो थर्मल एफिशिएंसी केते होबो बॉयलर एफिशिएंसी गुणन टरबाइन एफिशिएंसी इक्वल टू हमर हेजबो थर्मल एफिशिएंसी तले केते 0.85 गुणा 0.9 इक्वल टू 45 ହେଲା 4 6 0.0 आज हमर 0.765 तले तो हम परसेंटेज लिख देले केते हो इनटू 100 कर देले आज केते 76.5% तले हमर एटी जानले कोन थर्मल एफिशिएंसी हला बॉयलर एफिशिएंसी गुणा टरबाइन एफिशिएंसी तले हमर दे देछि डाटा the overall efficiency of a steam power station is dash its thermal efficiency se kuch overall efficiency of a steam power station is less or greater than or equal to its thermal efficiency the right answer kon hoijiba amar eti less than its
थर्मल एफिशिएंसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन देला मेकानिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू ए डीसी जनरेटर एट द रेट ऑफ कितना देला 4200 जूल पर सेकेंड। देन द जनरेटर delivers 32.2 एम्पियर एट 120 वोल्ट रे। तले द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर तले एठी हम कोन जानले इनपुट पावर फास्ट केते हमर देला 4200 जूल पर सेकेंड। तले हमर इनपुट पावर इक्वल टू हमर केते हला जूल पर सेकेंड को हम कोन लिख पारे वाट लिख पारे ना नहीं। तले इनपुट पावर केते हला हमर 4200 वाट। तले आउटपुट पावर केते होबो तले हमर आउटपुट पावर केते होबो पी आउटपुट इनपुट हमर केते हला 4200 वाट पी आउटपुट हला तले से जो पावर केते डिलीवर करछ 32 रे एम्पियर को एती वोल्ट तले गुणी देला हमर आउटपुट आछिबो। तले 32 गुणा 120 इक्वल टू केते होबो 3864 वाट इनपुट पाई गले आउटपुट पाई गले। एबे हम एफिशिएंसी बाहर कर परबा। तले एफिशिएंसी हमर फार्मूला को आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर गुणा 100। तले हम जानि जंती आउटपुट पावर केते ओके द 3864 डिवाइड बाय 4200 into 100 3864 डिवाइड बाय 4200 गुणा 100 आज आमर कटि देले 0 0 42 42 50 नुआ 92% आज आमर ओवरऑल एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर केते हला 92% जोटा हला ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन द पेनस्टॉक टर्बाइन एंड जनरेटर एफिशिएंसी आर रेस्पेक्टिवली 95 90% और 85%। तले ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट केते पचार जे हमको तले हम सॉल्व करबा। ताले हमर ओवरऑल एफिशिएंसी हमर केन बाहर करबा एटा ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू हमर पेनस्टॉक एफिशिएंसी तीनटा अंगर गुणी दबा पेनस्टॉक आउट टर्बाइन आउ जनरेटर एफिशिएंसी पेनस्टॉक टर्बाइन आउ जनरेटर एफिशिएंसी तले हमर केते हो 0.95 गुणा 0.90 गुणा 0.85 इक्वल टू हमर केते हो 0.726 परसेंटेज लिखले केते हो 72.6%। ताले कोन एटी हम जानले ओवरऑल एफिशिएंसी प्लांट जदी एबला क्वेश्चन पड़ला ताले हम तीनटा सीधा गुणी दबा एकर आंसर हमर भारी आछियो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट पॉइंट डेली लोड कर्व कौन रिप्रेजेंट करे एवरेज डिमांड ना मैक्सिमम डिमांड ना लोड फैक्टर ना नॉन ऑफ द अबव। तो हमरो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेली लोड कर्व कौन रिप्रेजेंट करे मेनली मैक्सिमम डिमांड को से रिप्रेजेंट करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द डिमांड फैक्टर जनरली कौन लेस देन 1 ना मोर देन 1 ना इक्वल टू 1 ना नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमर सब बळे जीवो डिमांड फैक्टर सब बळे लेस देन 1 रहबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा।
सेमती हमर लोड फैक्टर जनरली केते रहबो लेस देन रहबो 1 ना मोर देन 1 ना इक्वल टू 1 ना नॉन ऑफ द अबव लोड फैक्टर भी हमर लेस देन 1 रहबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा the diversity factor is always kete less than 1 na greater than 1 na equal to na none of the above diversity factor amar sobbole greater than 1 rahbo then next question ko jiba if the maximum demand je kohila kono maximum demand on the plant is equal to the plant capacity jodi maximum demand amar equal rahbo ka saito to the plant capacity then the value of load factor kon hobo is equal to the plant capacity factor equal hobo na less than plant capacity factor hobo na adhika hobo plant capacity factor charu kimba none of the above सबले मन रखिए जतले मैक्सिमम डिमांड on the plant is equal जतले रहबो का सहित प्लांट कैपेसिटी सहित सेतबेले is equal to the capacity factor सहित हबो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर then next question को जिबा the load factor of a power station increases then कौन होबो the cost per unit generated will be कौन होबो कुछ लोड फैक्टर जदि पावर स्टेशन इंक्रीज होला तल कॉस्ट पर यूनिट कौन हो बढ़िबो ना कमिबो ना समान रहबो ना डाटा इनकम्प्लीट तल द राइट आंसर इज हमरो कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो एटा बढ़िले एटा कमिबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इफ द डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीजेस कहला डाइवर्सिटी फैक्टर जदि बढ़िला ताले मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन कोन होबो डिमांड सेम रहबो ना कमी जिवो ना बढ़िबो ना नन ऑफ द अबव रहबो द राइट आंसर एटी हमरो कमी जिवो डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज हेले मैक्सिमम डिमांड डिक्रीज करबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा in power system diversity factor dash as we move from consumer to power station कोची गोटे पावर सिस्टम रे हमर डाइवर्सिटी फैक्टर कोन हो कमिबो ना बढ़िबो ना समान रहबो ना नन ऑफ द अबव पावर सिटी फैक्टर कोन हो डाइवर्सिटी फैक्टर डिक्रीजेस as we move from consumer to जतले कंज्यूमर रो पावर स्टेशन को जाए सेतले हमर डाइवर्सिटी फैक्टर कमे देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा there is no standby losses in dash plant कुथरा हमर स्टैंडबाय लॉसेस न थाए स्टीम पावर रे ना हाइड्रोलिक रे ना न्यूक्लियर रे ना डीजल रे तो राइट आंसर इज हमर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रे हमर स्टैंडबाय लॉस न थाए देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द आइडियल लोड फैक्टर शुड बी केते हो 1 ना 0.5 ना 0.2 0.18 सब मन रखिबा आइडियल लोड फैक्टर हमर सब बळे 1 ही रहे then next question को जिबा the base load power station supplies load dash in a day जे base load power station supply हमर load supply करे केते डे रे गोटे दिन रे 10 घंटा ना 16 घंटा ना 24 घंटा ना 12 घंटा तो राइट आंसर हमर जो 24 घंटा 24 आवर्स then next question को जिबा the capacity of power plant is generally made dash more than the maximum demand to meet the future load requirement कुछ capacity of a power plant is generally हमरो जो power plant तैयार कर जाता है तार capacity केते थाए and the maximum demand to meet the future load केते रु केते रेंज रो तार थाए minimum और maximum demand supply से करि परिबो 60 टू 70 ना 15 रु 20 ना 90 रु 95 ना 55 रु 60% तो राइट आंसर केते हो हमरो ताले हमर राइट आंसर इज 15 रु 20% तो हला ऑप्शन बी ए बेस लोड स्टेशन हैज ए कैपेसिटी देला केते 18 मेगावाट रो बेस लोड स्टेशन रो कैपेसिटी देला देन देला द एनुअल आउटपुट ऑफ द स्टेशन देला केते एति की किलोवाट आवर
ताले पचार हमको एनुअल लोड फैक्टर ऑफ द स्टेशन ताले ताको हम सॉल्व कर दवा तार हम एनुअल लोड फैक्टर ऑफ द स्टेशन केते बाहर हबो एनुअल लोड फैक्टर इक्वल टू कौन हम द एनुअल आउटपुट ऑफ द स्टेशन डिवाइड बाय बेस लोड ताले हमर केते 101.35 into 10 to the power 6 डिवाइड बाय बेस लोड एटी किलोवाट रे देछि देखंतु एटी देछि मेगावाट ताको हम मेगावाट को किलोवाट रे कन्वर्ट कर दो तल 18 गुणा 10 to the power 3 इंटू आमर ये दिला एनुअल देछि जेतु केते घंटा हबो दिन केते 24 घंटा तले 24 गुणन हमर वर्ष को 365 24 50 20 0 लेबो 0 12 24 हेले 8760 आवर गोटे वर्ष हेले एतिका इंटू एतिक हम गुणी दबा एनुअल जो दी 8760 आपको हम सॉल्व कर देले हमर आंसर पळे आसीबो एनुअल लोड फैक्टर रो ती सॉल्व कर देले हमर आ जीवो 64.2% एटा हला हमर एनुअल लोड फैक्टर फर्स्ट कोन कले हम आउटपुट पावर स्टेशन हम जति के आउटपुट डिवाइड बाय हमर बेस लोड इनपुट टा मेगावाट को किलोवाट रे कन्वर्ट करले एनुअल जेतु देछि हम ताको आवर रे कन्वर्ट किलोवाट आवर दे तेनो ताको हम आवर रे कन्वर्ट करते वर्ष को एति घंटा तले हमर आंसर पर आसीबो एटी 64.2%। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा if all the plants the minimum quantity of fuel required is in hydraulic plant na thermal power plant na diesel plant na nuclear power plant मिनिमम क्वांटिटी के उतरे फ्यूल कम दरकार सब न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत कम एनर्जी कम फ्यूल जो उतरे की हाई एनर्जी में प्रोड्यूस करते। द नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइड बाय 20 आवर गिव्स कौन हम तो यूनिट जनरेटेड ना एवरेज लोड ना मैक्सिमम डिमांड ना नॉन ऑफ द अबव कलाटी एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइड बाय 20 आवर गिव्स हम कौन देबो हम देबो एवरेज लोड। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन देला द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर देला 2 किलोवाट एंड हिज डेली कंजम्पशन देला केते 20 यूनिट मैक्सिमम डिमांड है केते 2 किलोवाट रो और डेली कंजम्पशन है 20 यूनिट इज लोड फैक्टर केते ताले हमर लोड फैक्टर फार्मूला कोन लोड फैक्टर इक्वल टू हमर डेली कंजम्पशन केते हला डेली कंजम्पशन डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड केते 2 किलोवाट देचे इनटू 24 आवर इनटू 100 हेले हमर लोड फैक्टर परसेंटेज भारी आसीबो तले हमर एटी केते हला ताले हमर डेली कंजम्पशन केते हला 20 यूनिट रो डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड केते 2 किलोवाट 2 इनटू 24 इनटू 100 ताले हमर काटी दबा 2 रे काटले 10 1000 बाय 24 हमर ए जो 24 जो 6 लबे 441.6% बाहर जीवो। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डीजल पावर स्टेशन इज जनरली यूज्ड एज डीजल पावर स्टेशन में जनरल कौन बेस लोड स्टेशन ना पीक लोड स्टेशन ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द अबव तले राइट आंसर हम रेट हिजबो पीक लोड स्टेशन हिसाब रे यूज करंती।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा an interconnected grid system the diversity factor of the whole system कौन हो बढ़िबो ना कमिबो रिमेन सेम रहबो ना नन ऑफ द अबव ठीक बढ़िबो होल सिस्टम इंक्रीज हो interconnected grid system रे then next question the desirable quantities of the power system are high load factor and diversity factor na low load factor and diversity factor na low load factor and high diversity na high load au low diversity the right answer amre jibo high load factor au diversity factor then next question ko jiba in interconnected grid system more efficient plants are used as peak load station na base load na both A and B na none of the above so the right answer it is jibo amro base load station the next question the knowledge of diversity factor helps in determining diversity factor the knowledge हम कौन determining करियर साहाଯ୍य करे ना average load ना unit generated ना plant capacity ना none of the above the right answer is हमरो plant capacity determine करियर हमको help करे the next question को जीवा in a thermal power station economizer are used to heat हम थर्मल पावर स्टेशन इकोनोमाइजर यूज करा जाए टू हिट कौन हिट करिया पई एयर को ना स्टीम को ना फीड वाटर को ना नन ऑफ द अबव इकोनोमाइजर काम होला हमर हिट का करिवो फीड वाटर सप्लाई को जो वाटर सप्लाई दिया जाए ताको गरम करिया पई देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा in thermal power station superheater hits superheater thermal power station में कौन हिट करे steam ना air ना feed water ना none of the above superheater रो काम वाला से steam को हिट करिवो then next question को जीवा for low head ଆଉ large discharge the hydraulic turbine used is low head ଆଉ large discharge में फ्रांसिस हम यूज करिया ना पेल्टन ना kaplan ना नन ऑफ द अबव लो हेड थिले मन रखिबे और लार्ज डिस्चार्ज पे हेले मन रखिबे kaplan सिंदे मोर एटा लो हेड पे हेला सिंदे हाई हेड पे हेले मोर पेल्टन टर्बाइन ताले फ्रांसिस टर्बाइन कोथबे मते कमेंट करी कहबे पिला माने देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ए डीजल पावर स्टेशन आज फ्यूल कंजम्पशन देला 0.20 kg per kilowatt hour the calorific value of the fuel dela ke 10000 then पचाला the overall efficiency of the station हम सॉल्व करिबा ताहले हमर एटी कोन हला heat produced by हमर जो 0.28 kg per kilowatt hour of ताहले हमर heat produced by 0.28 kg of oil equal to केते होबो इति गुणित तो भाई तेरा हमारा जीवो किलो कैलोरी कैलोरी वैल्यू सहित ताल 0.28 गुणा 10000 केते होबा हमर 2800 किलो कैलोरी देन पचरला हम जानि जे 1 किलोवाट आवर केते 1 kilowatt hour equal to 860 किलो कैलोरी 860 किलो कैलोरी देन ओवरऑल एफिशिएंसी हमर कोन फॉर्मूला आउटपुट बाय हीट कंबशन जति हमर केते किलो कैलोरी रो हीट कंबशन होला तला आउट ओवरऑल एफिशिएंसी केते electrical output divided by heat of combustion तला हमर इलेक्ट्रिकल आउटपुट केते हला 860 डिवाइड बाय 2800
गुणा 100 हमर एफिशिएंसी बाहर 0 कटिगला 14 6 30 14 का जो तो हम सॉल्व कर देले हम आज जीवो 30.7% कटले हमें जो 2 8 2 3 6 14 3 42 ठीक है 30.7% रे भारी अछि। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा A diesel power station has fuel consumption per day dela etiki kg unit generated by day dela etiki kilowatt hour the specific fuel consumption ताले ताको हम सॉल्व कर दबा ताले हम स्पेसिफिक fuel consumption केते बाहरिबो सिंपली हम कोन कर दबा जति पावर कंजम्पशन पर डे होची जति सॉरी fuel consumption होची डिवाइड बाय केति के हमर एनर्जी जनरेट होची 0 कटिगला 1/4 इक्वल टू 0.25 kg per kilowatt hour तर आंसर इज ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट को जीवा To supply base load of power station, dash power plant is very suitable. Diesel, nuclear, gas, none of the above. Base load of a power station, dash. The right answer हम रही जीवो nuclear power plant best suitable से कैसे रहेगा। To supply peak load of a power station, dash power plant is very suitable. Peak load पाई हमारा थर्मल ना डीजल ना न्यूक्लियर ना नॉन ऑफ द अबव सब बड़ा मन कि पीक लोड पाई थर्मल हमर सुटेबल रहे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द पीक पावर सप्लाइड बाय पीक लोड स्टेशन इज वेरी चीप ना वेरी कॉस्टली ना सेम एक्सपेंसिव एज बेस लोड द राइट आंसर इज हमर वेरी कॉस्टली। The next question को जीवा A large hydraulic power station has head दे देला केते 324 मीटर average flow देला केते 1370 मीटर क्यूब पर सेकंड the reservoir has an area दे देला एतिकी 6400 किलोमीटर स्क्वायर the available hydraulic power is केते मेगावाट रो ताको सॉल्व कर दबा ताले हमरो अवेलेबल पावर रो हाइड्रोलिक पावर फार्मूला केते आजिवो पावर पई हम बाहर करिया P = 9.8 QH ताले हमरो 9.8 into Q ताले हमरो फ्लो केते देला एटी 1370 गुणा 1370 गुणा हमरा हेड केते देला 324 देला ताले ताको हम गुणी दबा ताले ताको गुणी देला हमरा आस जीवो 9.8 into 1370 into 324 tikla हमर किलोवाट पक्का पे हमरा आस जीवो 4350 गुणा 10 to the power 3 हमारा आंसर दे मेगावाट रे तले हम डिवाइड कर दो 1000 तले हमारा जो एति के मेगावाट। The next question को जीवा Which of the following material is used as a moderator in nuclear power plant? Nuclear power plant रे हमर moderator कोटा यूज करन जोटा मंद को कहंती
ग्राफाइट ना बोरॉन ना प्लूटोनियम ना कैल्शियम तो राइट आंसर हमर एठी जिवो ग्राफाइट को हम आज बंधक भाव में यूज करती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूटिलाइज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ना फिजियन ना बोथ फ्यूजन एंड फिजियन ना नॉन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर सब मन कि हमर फिजियन यूज हुए फिजियन प्रोसेस रे पावर प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट है वाटर हैमर अकर्स इन कोथर वाटर हैमर सोर्स टैंक ना पेनस्टॉक ना ड्राफ्ट ट्यूब ना टर्बाइन पेनस्टॉक रे वाटर हैमर करा जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन condensers in thermal power plant used for condensing condenser ର मेन काम है गरम को ठंडा करिवो द राइट आंसर है जो हमरो स्टीम टू वाटर गरम जो बाष्प को से वाटर रे कन्वर्ट करिवो कंडेंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन control rods are used in nuclear reactor as made of कंट्रोल रॉड जो हम यूज कर जाए न्यूक्लियर रिएक्टर से कोथरे तयारी ना जिंक रे ना लेड रे ना बेरिलियम रे ना बोरॉन ने तो राइट आंसर है जो हम बोरॉन ने कंट्रोल रॉड। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विल टेक लीस्ट टाइम टू स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड कंडीशन टू फुल लोड कंडीशन कोल्ड कंडीशन नो फुल लोड पे किए और कम टाइम नो न्यूक्लियर ना हाइड्रो ना स्टीम टर्बाइन ना गैस टर्बाइन तो राइट आंसर हमर हे जिवो एटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कारण संगे संगे तो पानी गला एपटे हम टर्बाइन ने प्रोड्यूस होला जेमिति कोयला रे कोन तार मैक्सिमम हीट पे टाइम लागिवो सेमिति अलगा जो हमर होला न्यूक्लियर रे भी सेम टाइम लागिवो गैस टर्बाइन ने सेमिति टाइम लागिवो हाइड्रो रे हमर छोटो कम टाइम। The next question which of the following plant has maximum capital cost क्यों प्लांट रो maximum पैसा अधिक लगे स्टीम प्लांट ना हाइड्रो ना डीजल ना न्यूक्लियर तो राइट आंसर है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रे अधिक हमर कैपिटल कॉस्ट थाए कारण से मोस्ट एक्सपेंसिव सब जिनस लगे जेतु हमर न्यूक्लियर रेडिएशन पे तनु करी सेटा कैपिटल कॉस्ट हाई। The next question the demand factor of a power station is demand factor सब बड़े कौन होगा greater रहेगा unit चाहूँ ना normally greater than unity always lesser than unity ना normally lesser than unity सब बड़े मन रखिए demand factor हमारा power station में कौन रहेगा always सदा बड़े less than unity एक चाहूँ कम रहेगा। The next question a generating station has maximum demand tela kete 20 megawatt and connected to 40 megawatt the demand factor kete हम demand factor एला kete हो maximum demand by हमरो connected load हमरो maximum demand kete 20 हम load connected load kete एला 40 तो काटी दबा kete होबो 1/2 राइट आंसर कहते हैं ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द लोड पावर फैक्टर ऑफ ए पावर प्लांट इज जनरली इक्वल टू 1 रहइबो ना मोर देन 1 रहइबो ना ऑलवेज लेस देन 1 ना नॉर्मली मोर देन 1 तो द राइट आंसर हमर कहते हो ऑलवेज लेस देन 1 पावर फैक्टर मन रखिबे ऑफ पावर प्लांट रो सब लेस देन 1 रहइबो। The next question को जीवा a system has connected a load 120 kilowatt peak load केतेला 100 kilowatt base load देला 25 kilowatt average load देला केते 48 kilowatt तो load factor केते पूर्व भी करथिले आप सब मन के load factor हला हमरो average load by maximum load तला हमरो average load केते average load divided by maximum load average load हमर केते 48 divided by maximum load केते जोटा peak load divided by 100
ताले हम परसेंटेज रे केते हिजो 0.48 परसेंटेज परसेंटेज रे ले जो हम 40 into 100 कर दो डायरेक्ट बाहर जो एटी ताले 48 परसेंटेज हिजो द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन in nuclear reactor chain reaction is controlled by introducing गोटे न्यूक्लियर रिएक्टर रे चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल केमि करिया आयरन रॉड द्वारा ना ब्रास रॉड ना कैडमियम रॉड ना ग्राफाइट रॉड द्वारा राइट आंसर है जो हमरो कैडमियम रॉड द्वारा हमें ताको चेन रिएक्शन को कंट्रोल करंती सिस्टम एक्सपीरियंस पीक डिमांड पावर सिस्टम रा पीक डिमांड केते बळे थाए मिडनाइट टू 8 am ना 6 pm टू 10 pm na 2 pm to 6 na 8 to 2 pm then the right answer is option B then next question ko jiba the main advantages of hydro plants kon tar advantages of option dela low operating cost can be started and loaded quickly कम operating cost tar rohe tab the next can be used as a base and peak load so the right answer is हम तीन टांग मेजर एडवांटेजेस तार लो कॉस्ट भी आउ जल्दी स्टार्ट हो परिबो लोड भी हमर दे परिबा देन हम बेस आउ पीक लोड पई भी यूज कर परिबा the next question in which part of thermal plant the steam pressure is less than the atmosphere क्योंकि हमर पावर प्लांट रो स्टीम प्रेशर सबुटे कम थिबो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर रे तुलना रे बॉयलर रे ना टरबाइन ना कंडेंसर ना सुपर हीटर तो राइट आंसर इज हमर कंडेंसर रे द नेक्स्ट क्वेश्चन जिबो डाइवर्सिटी फैक्टर इनटू maximum demand is diversity factor or maximum demand multiply com average demand na sum of consumers maximum demand na installed capacity na generated power so the right answer is amra average demand dala option A then next question ko jiba the knowledge of diversity factor helps in computing plant capacity na average load na unit generated kete kilowatt ro na peak load so the right answer is plant capacity the next question large size steam plant and nuclear plants are suitable for बड़ देखते steam plant और बड़ nuclear plant कोथ में suitable peak load ना base load ना intermediate load ना both peak और base load तो the right answer हमर जो base load पे suitable the next question को most of the generators in thermal plants run at कितने आरपीएम रे चलती जनरेटर गुड़ा मेनली हमर थर्मल पावर प्लांट 1500 आरपीएम 750 आरपीएम 3000 आरपीएम 1000 आरपीएम तो द राइट आंसर इज 1500 आरपीएम द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which of the following plants are free from environmental problem क्यों प्लांट हमर environmental problem किछ न तो कि environmental लागे से हानिकारक डीजल इंजन ना न्यूक्लियर ना स्टीम ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो द राइट आंसर हमर इजो द राइट आंसर हमर इजो एटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा in India transmission of electric power is done by हमर इंडिया रे मेनली ट्रांसमिशन हम जो इलेक्ट्रिक पावर केमिति हुए ना 3 फेज 3 वायर ना 3 फेज 4 वायर सिस्टम ना सिंगल फेज सिस्टम रे तो द राइट आंसर हमर एटे जिवो 3 फेज और 3 वायर सिस्टम रे ट्रांसमिशन हुए द नेक्स्ट क्वेश्चन as a matter of economy voltage of power transmission should be voltage of power transmission should be कौन low होबो ना medium ना high ना none of the above तो the right answer हमर एटी जिवो high होबो the next question when transmission voltage is increased the line losses are कौन होबो तो ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज होबो लाइन लॉसेस कौन होबो डिक्रीज होबो ना इंक्रीज ना रिमेन सेम ना नन ऑफ द अबव तो द राइट आंसर हमर एटी डिक्रीज करिवो द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
if voltage is increase n time, so voltage जब n time बढ़ी गला the size of conductor would be केते हो increase by n time हबो ना 1 by n time हबो reduce हो जिवो ना increase by n square time किबा reduce 1 by n square time। चल मन के जब voltage हमर n time बढ़ी गला से तो हमर conductor would be reduce by 1 by n square time। the next question को जिवो if a supply system the cost of conductor supply system रे cost of conductor कौन हो directly proportional to area of cross section ना inversely proportional to area of cross section ना directly proportional to the square of area of cross section ना none of the above। supply system रे हमर conductor का सहित ना directly proportional to area of cross section। the next question the term service means refer to service हम कौन refer करे primary transmission secondary transmission ना primary distribution ना secondary distribution। चलता राइट आंसर हमारे जो secondary distribution को से refer करे। the next question को जिबा the economic size of conductor is determined by का द्वारा हम डिटरमाइन करते ओम्स लॉ ना केल्विन्स लॉ ना किर्चॉफ्स लॉ ना नॉन ऑफ द अबव। द राइट आंसर हमारा इट इज केल्विन्स लॉ इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय केल्विन्स लॉ। इन ए 3 phase 4 wire AC system से कुछ गोटे 3 phase 4 wire AC system रे तो नंबर ऑफ वोल्टेज केते हमें नंबर ऑफ वोल्टेज पांती ऑप्शन तला 2टी 3टी 4टी नॉन ऑफ द अबव। तलता राइट आंसर है हमर 3 phase 4 wire system ने मन रखियो सब बळे हम 2टी वोल्टेज पांती टोटल ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द इलेक्ट्रिक पावर इन इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय डीसी बिकॉज कुछ इलेक्ट्रिक पावर हमर ट्रांसमिटेड हे पारेनी का डीसी रे तार कारण कोन ऑप्शन देला देयर इज ए स्किन इफेक्ट इन डीसी देयर इज ग्रेटर वोल्टेज ड्रॉप से वोल्टेज ड्रॉप अधिक थिबो किबा डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप हे परिबन किबा नॉन ऑफ द अबव। तलता राइट आंसर हमर कोन हो से कुछ इलेक्ट्रिक पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय डीसी जे हमर जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिटेड बाय डीसी द्वारा कोन पे हे पारेन तार कारण हला द डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप डीसी वोल्टेज को हमें स्टेप्ड अप करि परिबन। तो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बाय एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वी मीन वोल्टेज अप टू तल केते वोल्टेज सेटा हमरो केते केबी रो 66 केबी ना 33 केबी ना 100 केबी ना एबव 220 केबी। तल राइट आंसर है जीवो हमरो एटा अप टू बाद एबव 220 केबी EHV जोटा कहउछन हमरो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ते अप टू हबनी एक्सटेंड हबो जोटा है जो ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जो 220 kV ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज इकोनॉमिकल फॉर डिस्टेंस ऑफ जो हमर 220 वोल्टेज जो केवी ट्रांसमिशन लाइन हमर केते डिस्टेंस पर्यंत हमर से इकोनॉमिकल रहबो माने कम जोता हमर पैसा लागे 22 किलोमीटर ना 100 किलोमीटर ना 200 किलोमीटर ना 400 किलोमीटर। तो राइट आंसर है जीवा हमर 200 किलोमीटर पर्यंत जोटा है ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा with the increase in value of voltage को हमर voltage जदि बढ़िला value कारण voltage रो and power factor voltage और power factor जदि बढ़ी गला तल तो cost of transmission line conductor कोन हो जदि voltage और power factor बढ़ी गला तल cost of transmission line नो कोन हो कमी जीवो ना बढ़ीबो ना किछि चेंज होबनी ना इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली माने अधिक बढ़ी जीवो। तल तो राइट आंसर कोन हो हमर सो मन के जदि हमर ए दुटा वोल्टेज आ पावर फैक्टर जदि इंक्रीज हैला तर वैल्यू तल हम ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर कोन हो डिक्रीज हे जो जोटा है ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
इन ए ट्रांसमिशन लाइन द मेजर कॉस्ट इज ड्यू टू ट्रांसमिशन लाइन मेजर कॉस्ट का लगी हमर इन्सुलेटर ना कंडक्टर पे ना टावर पे ना नन ऑफ द अबव तो राइट आंसर हमर हो कंडक्टर पे हमर मेजर कॉस्ट सेटा हमर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा by increasing the transmission voltage to double कुछ हमर कोन कला ट्रांसमिशन वोल्टेज को हम कोन कला डबल कले ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू त जा वैल्यू थिला ताको हम डबल कर देल तल द सेम पावर कैन बी डिलीवर्ड कीपिंग द लाइन लॉस तल केते हमर हबो जो हमर कीपिंग द लाइन लॉस रे इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू हबो ना हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ना ओरिजिनल वैल्यू डबल हो ना 1/4 द ओरिजिनल वैल्यू तल द राइट आंसर हमर एठी हो 1/4 हो ओरिजिनल वैल्यू देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द फीडर इज डिजाइन मेनली जो हमर जो फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ का को हम नजर रख के फीडर डिजाइन करा जाए मेनली इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी ना वोल्टेज ड्रॉप यूनिट ना ऑपरेटिंग वोल्टेज ना ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फीडर मेनली हमर डिजाइन करा जाए बेसिकली तार करंट कैरिंग कैपेसिटी केते होची ताकू डिपेंड करी हमर फीडर डिजाइन करा जाए देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज कैरिड आउट एट हाई वोल्टेज कुछ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जतले हमर ट्रांसमिशन हुए हाई वोल्टेज रे तर मेन कारण को बिकॉज इट रिड्यूसेस द कौन रिड्यूस करे वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल द परसेंटेज ऑफ लाइन ड्रॉप बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव तल तर मेन रीजन दीटा करू हमर ए और बी तन को राइट आंसर हम रेजो एटी बोथ ए एंड बी जो तरे कोन होची ना वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल भी रहबो ता सहित हमर परसेंटेज लाइन ड्रॉप भी रहूची सेति पे हम ताको जेतला हमर जो पावर जो प्रोड्यूस हुए सेठो हमर जेतला पड़े हाई वोल्टेज देखिए हम पठा दी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हम द disadvantages of power transmission at high voltage is an increased cost of से कुछ हमर disadvantages of power transmission at high voltage power transmission at high voltage increase cost of car na insulating the conductor na transformer switch gear etc na both a and b and none of the above so the right answer is amara d tank both insulating the conductor and transformer switch gear etc so the right answer is amara option c the next question को हम जीवा the high voltage DC transmission is better than high voltage AC transmission तार कारण कौन सी कुछ हम DC transmission high voltage DC transmission is better than AC transmission तुलना रे तो मेन कारण को ऑप्शन दला absence of inductance and capacitance the absence of skin effect ना बेटर वोल्टेज रेगुलेशन तो राइट आंसर एटी कोन हो प्ले माने तर मेन कारण हैला गोटे कारण जोटा कि एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस आ कैपेसिटेंस आ गोटे एब्सेंस ऑफ स्किन इफेक्ट आ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन तेन कर त राइट आंसर है जो हमरा तीन टाइम होउची तेन कर ऑल ऑफ द अबव टोटल ऑप्शन डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट इन तले कुछ स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट कोथरे ना डीसी ट्रांसमिशन लाइन ना एसी ट्रांसमिशन लाइन ना केबल कैरिंग डीसी ना नन ऑफ द अबव त राइट आंसर हमर एटी हिजबो एसी ट्रांसमिशन लाइन देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल से कुछ जदि हमर फ्रीक्वेंसी बढ़े दबा ट्रांसमिशन लाइन में तले कोन हो इंक्रीज साउंड कैपेसिटेंस बढ़ जिवो साउंड कैपेसिटेंस बढ़ जिवो ना लाइन रेजिस्टेंस कमी जिवो
ना लाइन रेजिस्टेंस बढ़ी जीवो ना लाइन रिएक्टेंस कमी जीवो तले त राइट आंसर एटी हमर कोन हबो जे हमर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज करा जाय ताले हमर त लाइन रेजिस्टेंस भी बढ़ी जीवो तेनको राइट आंसर इज ऑप्शन सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर रो नॉर्मल कंडीशन ने केते तो राइट आंसर हमर इट इज ऑप्शन ए द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which of the following voltage regulation is best निम्नलिखित में क्यों वोल्टेज रेगुलेशन सबटर बेस्ट उत्तम 30% 2% 70% 90% ताल राइट आंसर इज हमर 2% सबटर बेस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ए डीसी लाइन कंपेयर टू इक्विवेलेंट एसी लाइन कैरीज कुछ गोटे डीसी लाइन कंपेयर का सहित करा कंपेयर टू एन इक्विवेलेंट एसी लाइन कैरीज कौन ना अधिक पावर नहीं ना कम पावर ना सेम पावर ना नॉन ऑफ द अबव तो राइट आंसर इज अधिक पावर जोटा ऑप्शन ए द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड लाइन हमर मेनली को मटेरियल यूज करा जाए ऑफ एन इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड लाइन पे ऑप्शन देला प्रोक्लेन स्टेटाइट ग्लास नॉन ऑफ द अबव ताल द राइट आंसर इज हमरा प्रोक्लेन जोटाला ऑप्शन ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा फॉर डीसी सिस्टम द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज डीसी सिस्टम रे हमरा स्ट्रिंग एफिशिएंसी केते थाए 50% 75 85 100% ताल द राइट आंसर हमरा एटी केते हो 100% जोटाला ऑप्शन डी string efficiency then next question को जीवा suspension type insulator are used for voltage beyond suspension type जो हमर insulator यूज करा जाए for voltage beyond केते भीतर 400 वोल्ट 11 kV 33 kV 800 वोल्ट तो द राइट आंसर इज हमर 33 kV The next question को जीवा the potential across the various discs of suspension string is different due to option देला self capacitance ना shunt capacitance ना both A and B ना none of the above so the right answer is कौन हबो सिर को जी the potential across various discs of a suspension string is difference due to मेनली आम रही शंट कैपेसिटेंस जोटा ऑप्शन बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द सैग डिपेंड्स ऑन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हमर सैग का ऊपर डिपेंड करे ऑप्शन दिला टेंशन इन द कंडक्टर मटेरियल ऊपर ना हाइट ऑफ टावर ऊपर ना ऑल ऑफ द अबव तो मेनली हमर सैग का ऊपर डिपेंड करे ओवरहेड ट्रांसमिशन में टेंशन इन द कंडक्टर ता ऊपर भी कंडक्टर मटेरियल को प्रकार मटेरियल से यूज करो छी आ हाइट ऑफ टावर इनको तो राइट आंसर एटी हमर कोन हो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर लाइन वोल्टेज इक्वल टू डैश इनटू voltage across string कुछ गोटे string of suspension insulator line voltage जो अच्छी dash into voltage across string ताले राइट आंसर कौन जो √3 गुणन voltage across string ना 3 गुणन voltage across string ना 1/√3 into voltage across string none of the above ताले राइट आंसर है जीवो √3 into voltage across string then next question को जीवा in a 33 kV overhead line 33 kV overhead line से दे दिला there are 3 units 3 unit in the string of insulator that the voltage across the string केते
ताले राइट आंसर एटी हमर केते हबो ऑप्शन ए 33/√3 केवी वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग हमता माने कोन जान जदी इक्वल टू फेज वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग इक्वल टू हमर हो जिवो फेज वोल्टेज देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फॉर्मूला पके देले एटा पळा आसीबो हमर पूर्व जो क्वेश्चन ने थिला से फॉर्मूला एटा डिवाइड हे जे √3 द नेक्स्ट क्वेश्चन सैग इज प्रोवाइडेड इन ओवरहेड लाइन सो दैट सैग जो प्रोवाइड करा जाए ओवरहेड लाइन ने कोन पई सेफ टेंशन इन नॉट एक्सीड रिपेयर कैन बी मेड कंडक्टर मटेरियल इज सेफ एंड नॉन ऑफ द अबव ताल सैग हमर कोन पे प्रोवाइड करा जाए मेनली ओवरहेड लाइन ने मेनली सेफ टेंशन इज नॉट एक्सीडेड जोटा ऑप्शन ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इफ द स्पैन इज इंक्रीज द सैग से कुछ स्पैन जदी इंक्रीज हला त सैग कोन हो कमी जीवो ना बढ़ी जीवो ना रिमेन सेम रहबो ना नॉन ऑफ द अबव ताल द राइट आंसर हो जीवो ये जदी इंक्रीज हला सैग भी हमरो बढ़ी जीवो टोटल ऑप्शन बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा The wind pressure is directly proportional to wind pressure का से तो directly proportional to speed of wind ना square of speed of wind ना square root of speed of wind ना none of the above then the right answer is हमारा wind pressure is directly proportional to square of speed of wind चलो option B then next question को जीवा कुछ इफ सेफ्टी फैक्टर इज डबल यदि हम सेफ्टी फैक्टर को डबल करा जाए तो सैग इन द लाइन विल बी कोन हो तल सैग एटी कोन हो जिवो सेफ्टी फैक्टर जे डबल हैला सैग एटी कमी जिवो ना बढ़िबो ना रिमेन सेम रहइबो ना नॉन ऑफ द अबव तल द राइट आंसर एटी हमर जिवो सैग एटी बढ़ी जिवो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन एन ओवरहेड लाइन तो wind load acts ओवरहेड लाइन ने हमर जो पवन लोड कोन एक्ट करे केमिति हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली डाउनवर्ड ना वर्टिकली अपवर्ड ना नॉन ऑफ द अबव का ऊपर हमरे जो तार नॉर्मल तार जो टणा हेता त ऊपर जो पवन जो विंड रो जो लोड पड़े से केमिति पड़िबो हॉरिजॉन्टली पड़िबो तो राइट आंसर हम रही जुएटी ऑप्शन the next question in a string of suspension insulators if sound capacitance decrease कुछ string of insulator हम sound capacitance decrease हैला then the string efficiency केटी कोन होबो कमी जीवो ना बढ़िबो ना रिमेन सेम रहबो ना नॉन ऑफ द अबव एटी हमरो string efficiency हमरो बढ़ी जीवो the next question को जीवा the conductor vibration of an overhead line may cause जो conductor vibration of an overhead line में जो vibration हुए conductor mainly may cause कौन कर बेरे breaking of insulator disc भांगी जीवो ना excessive sag अधिक sag होबो ना collapse of supporting structure हमर जो स्ट्रक्चर जो पार्ट्स हो लागे जिसे कोलैप्स हो जिवो ना ऑल ऑफ द अबव तल द राइट आंसर हो जिवो जदि कंडक्टर वाइब्रेशन हुए हमर मेनली ओवरहेड लाइन केस रे सब गुडा एडा हबो ब्रेकिंग एटा भी पारे कि एक्सेसिव सैग हबो नले कोलैप्स भी हो जिवो किंतु राइट आंसर हो जिवो हमर ऑल ऑफ द अबव देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवो इफ द string efficiency is increased से कुछ string efficiency यदि increase हैला तो the voltage across the disc nearest to the conductor कौन होगा increases ना remains the same ना decreases ना none of the above तो right answer रेडी है जो हमारा कुछ यदि इटा बढ़ी गला string efficiency बढ़ी गला तो voltage across the disc कौन है जो remains same रहेगा टोटल ऑप्शन बी the next question को जो A string suspension insulator has 3 discs.
गोटे स्ट्रिंग सस्पेंशन इन्सुलेटर केतरा डिस्क अछि 3टी डिस्क अछि if the disk nearest to the conductor flashes over that is breakdown जब भांगी जाए तल कोन होबो गोटे सस्पेंशन इन्सुलेटर 3टा डिस्क अछि जो गोटे डिस्क जदी भांगी जाए तल कोन होबो द रिमेनिंग डिस्क विल फ्लैश भांगी जिवो जो गोटे भांगी गला दुईटा भांगी जिवो all the remaining disk will remain intact option देला only the top disk will flash over भांगी जीवो केवल ऊपरटा किबा none of the above तलता राइट आंसर जो जदी गोटे भांगले रिमेनिंग डेटा को भी हमर भांगी जीवो टोटल ऑप्शन ए द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा in a string of suspension insulator the disk are connected in से कुछ गोटे string of suspension insulator रे तो डिस्क आर कनेक्टेड इन कोथरे कनेक्टेड करा जाय डिस्क को हम पैरेलल ना सीरीज पैरेलल नन ऑफ द अबव तो राइट आंसर इज हम सबले केस रे मन रखियो सबले सीरीज रे कनेक्टेड रहबो एटा ऑप्शन बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर सपोज गोटे स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर द चार्जिंग करंट इज मैक्सिमम थ्रू द डिस्क तल कोठी रहबो हमरो चार्जिंग करंट मैक्सिमम थ्रू द डिस्क कोठी रहबो नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म नियरेस्ट टू द कंडक्टर किबा इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग किबा नन ऑफ द अबव तल द राइट आंसर एटी हमर कोन होबो सो मन को नियरेस्ट टू द कंडक्टर पाखरे ही होबो करंट कंडक्टर पाखरे ही मैक्सिमम होबो टोटल ऑप्शन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सपोज इफ shunt capacitance in a string of suspension insulator is decreased suppose shunt capacitance in a string of suspension insulator जदि एटी कोन डिक्रीज हला त स्ट्रिंग एफिशिएंसी कोन हो रिमेन सेम रहबो ना डिक्रीज होबो ना इंक्रीज होबो ना नन ऑफ द अबव तल द राइट आंसर एटी स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमरो बढ़ी जीवो टोटल ऑप्शन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन ए string of suspension insulator the shunt capacitance can be decreased by using which हमर string of suspension insulator जदि हमर shunt capacitance कमे ताको डिक्रीज करियो भाई कोन यूज करिगे लॉन्गर क्रॉस आर्म ना शॉर्टर क्रॉस आर्म बड़ क्रॉस आर्म ना किबा छोटो क्रॉस आर्म ना लॉन्गर स्पैन्स ना नन ऑफ द अबव द राइट आंसर इज हमर लंबा क्रॉस आर्म यूज करके हम ताको डिक्रीज करि परिबा जोटाला ऑप्शन ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा in order to improve string efficiency जदि हम string efficiency को इंक्रीज करिया by the method of capacitance grading को मेथड ना capacitance grading the maximum capacitance is of the disk कोड रहबो maximum capacitance disk रो को जगह रहबो अधिक रहबो in the middle of string मझिरे रहबो string रो किबा nearest to the cross arm रो पाखरे किबा nearest to the conductor किबा none of the above तल द राइट आंसर इज हमर कोन द maximum capacitance is of the disk nearest to the conductor रहबो टोटल ऑप्शन सी 100% string efficiency माने मींस जो 100% string efficiency माने कोन ऑप्शन देला सेल्फ कैपेसिटेंस से 0 रहबो और shunt capacitance is maximum किबा सेल्फ कैपेसिटेंस इज इट होबा द मिनिमम इट मैक्सिमम हो जाई छि इट मिनिमम रहया था किबा shunt कैपेसिटेंस इज 0 द राइट आंसर इट कोन हो 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी माने shunt कैपेसिटेंस सबले सेठी हमर कोन रहबो 0 रहइबो द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा in a string of suspension suppose a string of suspension insulators voltage across तले हमर कोन voltage disk nearest to the cross arm is minimum middle disk is maximum disk nearest to the conductor तर माने conductor पाखरे जेथुवा disk अदर minimum रहइबो disk nearest to the cross arm पाखरे जेथुवा से maximum रहइबो
तो राइट आंसर कौन हम? Right answer is what? In a string of suspension insulators, voltage across disc nearest to the cross arm is minimum. In case हमरो minimum रहिबो जोटार option A. Then next question: if span length is doubled with no change, because span length कौन double हो गला. With no change in other factor, the sag of the line will become. तल केते होबो? जदि span length double हेगला तल the sag of the line will become केते हिजबो? 0.5 times, 8 times, 2 times, 4 times. So मन रखिबे केस रे तो एटा double हिजबो हमरो sag in the line will become तर double हेले तो 2 गुना बढ़ी जिवो जोटा हेला हमरो 4 time हिजबो 4 गुना हिजबो. Then next question: the effect of increase in temperature of overhead line is to सिकुची हमरो जदि हम टेम्परेचर बढ़िला कोथरे ना जो टेम्परेचर बढ़ले कोन इफेक्ट रहबो ओवरहेड लाइन में. ऑप्शन देला इंक्रीज द स्ट्रेस एंड लेंथ. जदि टेम्परेचर बढ़िला तला हम स्ट्रेस और लेंथ बढ़ी जिवो किंबा स्ट्रेस कमी जिवो लेंथ बढ़ी जिवो किंबा स्ट्रेस कमी जिवो आउ लेंथ मध्ये कमी जिवो किंबा नॉन ऑफ द अबव. द राइट आंसर मन रखियो टेम्परेचर बढ़िले ओवरहेड लाइन केस रे हमर स्ट्रेस डिक्रीज हे जिवो. टेम्परेचर बढ़ले हमर कोन हम तार लेंथ बढ़ी जिवो जोटाला ऑप्शन बी. मन ले प्ले मन जेतले हमर टेम्परेचर बढ़ी गला सेतले हमर स्ट्रेस कमी जिवो आउ लेंथ ओवरहेड लाइन में बढ़ी जिवो. Then next question: the sag of an overhead line is affected by. which is sag of an overhead line affected by का द्वारा ना conductor weight per unit length ना span and tension ना wind and temperature ना all of the above. तो the right answer is तीन टाइम को सेतरे affected करे तो right answer is all of the above. पवन और temperature span और tension conductor weight per unit length सब would affected हो. Then next question को जीवा कुछ the cost of an overhead line will increase. कुछ cost केतल overhead line न बढ़िबो if conductor spacing is decreased, conductor spacing is increased. कुछ conductor जो space ता भीतर gap थाए से यदि decrease होला किबा बढ़ी होला किबा ground clearance यदि ground clearance कमी गला किबा none of the above. तल the right answer हे जिवो केतबेले तार कॉस्ट हमर ओवरहेड लाइन न पड़ियो जेतबेले कंडक्टर स्पेसिंग जेतबेले गैप दिटा भीतर अधिक रहि जिवो इंक्रीज रहिबो बोले सेतरे हमर कॉस्ट अधिक लागिबो. द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कोरोना इज अफेक्टेड बाय. कोरोना का मेनली अफेक्टेड का द्वारा कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर साइज एंड स्पेसिंग of conductor na line voltage na all of the above. Corona is affected by तीन टांगर mainly the line voltage ala size and spacing of conductor condition of atmosphere. इनको the right answer है कौन है D. ताले next question को जीवा कोरोना इफेक्ट सेठी कौन हमर थिला कोरोना का द्वारा अफेक्टेड होची. कोरोना अफेक्टेड बाय पैरामीटर जेमि तीन टा जिंस हमर कोरोना इफेक्ट मेनली कॉजेस पावर लॉस इन द लाइन. जो पावर लॉस करिवो कोथर ना हमर लाइन में ओवरहेड लाइन में किबा कॉजेस इंटरफेरेंस इन रेडियो कम्युनिकेशन रे बाधा उत्पन्न करिवो किबा प्रोड्यूसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव किबा से निजे रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करिवो किबा ऑल ऑफ द अबव. तो द राइट आंसर इट इज हमर तीन टाइम को सी कौन कर पावर लॉस कर इन द लाइन में कि इंटरफेरेंस रेडियो कम्युनिकेशन को बाधा प्राप्त कर कि प्रोड्यूसेस रेडियो फ्रिक्वेंसी भी कर. राइट आंसर ये हमर कौन हो कोरोना इफेक्ट ऑल द अबव.
तुम जानले इफेक्ट केमी रिड्यूस कर कोरोना इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय केमी कम कर ऑप्शन इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज जब कंडक्टर साइज को हम बढ़े देले किंबा कंडक्टर साइज को कमे देले किंबा जो कंडक्टर भीतर जो गैप थाए ताको हम जदी कम कर देले किंबा नॉन ऑफ द अबव तल त राइट आंसर कोन हबो मेनली हम केमी इफेक्ट को हम रिड्यूस कर क्या डिक्रीज कर मेनली हम गोटे काम कले जदि हम कंडक्टर साइज को बढ़े दबा से हम रिड्यूस कर जोटा ऑप्शन ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द बंडल्ड कंडक्टर अरेंजमेंट रिड्यूसेस कौन रिड्यूस करे मेनली पावर लॉस ड्यू टू कोरोना ना रेडियो इंटरफेरेंस ड्यू टू कोरोना ना इंडक्टेंस ऑफ द लाइन ना ऑल ऑफ द अबव द राइट आंसर इज जोडी हमरा ऑल ऑफ द अबव तीन टाइम से करे पावर लॉस ड्यू टू कोरोना रेडियो इंटरफेरेंस ड्यू टू कोरोना इंडक्टेंस ऑफ द लाइन देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा if the spacing between conductors increases gap रही जाइए जदि गोटे कंडक्टर दुटा भीतर गैप जदि बढ़ी गला तो कोरोना इफेक्ट कौन हम चलो दुटा कंडक्टर भीतर जदि ये गैपटा हम बढ़ी गला तो कोरोना इफेक्ट कौन हम कुछ बढ़ी जीव ना सेम रहिबो ना कमी जीव ना नन ऑफ द अबव तो राइट आंसर है जो हमरो यदि स्पेस बढ़ला बोले कोरोना इफेक्ट हमर कोन हबो कमी जीवो राइट आंसर एटी कोन हबो ऑप्शन सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कुछ तो मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट व्हिच कोरोना ऑकर्स इज कॉल्ड तो कौन कहते हमर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ना विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज ना फ्लैश ओवर वोल्टेज ना नन ऑफ द अबव तो राइट आंसर हम रेडी जीवो ऑप्शन ए जोटा कहते क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा स्टैंडर्ड कंडक्टर हैज स्टैंडर्ड कंडक्टर कौन थी दरकार से कहूँ लेस कोरोना इफेक्ट देन सॉलिड कंडक्टर कुछ कम कोरोना इफेक्ट रहबो एज कंपेयर इफेक्ट रहबो मेनली इफेक्ट देन सॉलिड कंडक्टर तुलना कम इफेक्ट रहबो किबा अधिक रहबो एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर किंबा सेम रहबो एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर किंबा नन ऑफ द अबव तार राइट आंसर कोन हिजबो स्टैंडर्ड कंडक्टर हैज सो मन कि गोटे स्टैंडर्ड कंडक्टर रे अधिक कोरोना इफेक्ट थाए एज कंपेयर इफेक्टेड एज कंपेयर टू हमरा सॉलिड कंडक्टर तो द राइट आंसर एटी हमर कोन हिजबो ऑप्शन बी the next question को जीवा when the length of transmission line increases कुछ हमर ट्रांसमिशन लाइन न लेंथ जदि हम बढ़ी गला the resistance of the line कोन हो the length बढ़िले resistance हमर कोन हो remain same किछि चेंज होबनी कमी जीवो बढ़ी जीवो किबा नन ऑफ द अबव सो मन रखिबे जते हमर ट्रांसमिशन लाइन न लेंथ बढ़ी जाए से तो रेजिस्टेंस हमर कोन हो बढ़ी जीव जिते बढ़िबो सेते रेजिस्टेंस हमर बढ़ी जीव और जिते कम रहिबो सेते हमर रेजिस्टेंस डिक्रीज करिवो बढ़िले बढ़िबो कम हेले डिक्रीज हो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा when the length of a transmission line increases its inductive reactance कम सेठी हम देखिले लेंथ ऊपर कोन एठी देखिबा जतो लेंथ बढ़िला तो हमर इंडक्टिव रिएक्टेंस कोन होबो बढ़िबो ना कमिबो ना सेम रहइबो ना नन ऑफ द अबव तो राइट आंसर एठी कोन होबो इंडक्टिव रिएक्टेंस एठी हमर बढ़िबो लेंथ बढ़िले ये भी बढ़िबो द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा as the length of a transmission line increases its capacitive reactance कौन हम लेंथ से हमर बढ़ला बढ़िबो कमिबो रिमेन सेम नन ऑफ द जो मन रखिबे कैपेसिटेंस केस रे हमर कोन हो जिवो एठी कमी जिवो
कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमर कोन हो लेंथ बढ़िले कैपेसिटिव रिएक्टेंस कमी जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द कैपेसिटेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ मीडियम लाइन लॉन्ग लाइन शॉर्ट लाइन बा नॉन ऑफ द अबव कैपेसिटेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्टेड केतल नेग्लेक्ट हो इन केस ऑफ जिते बेले हमर मीडियम लाइन थिबो the next question in a AC system the skin effect AC system में skin effect कौन reduces effective area of conductor increases resistance of conductor causes greater power loss किंबा all of the above ताल ता right answer है जो हमर तीन टांग से तर रहउची तीन को हमर कोन हो all of the above the next question को जिबा The skin effect depends upon skin effect mainly क्या पर depend करे nature of material ना diameter of wire ना frequency ना all of the above skin effect हमर main nature of material ऊपर depend करे simultaneously diameter of wire as equal to frequency सहित भी depend करे तेणु right answer है हमर कोन हो all of the above then next question को जिबा capacitance of transmission line कोन ना affect transmission line ना आफ्टर पावर फैक्टर ना कॉजेस चार्जिंग करंट ना ऑल ऑफ द अबव तो राइट आंसर है जो हमरा ऑल ऑफ द अबव देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्किन इफेक्ट कोन हो जो कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी जदी बढ़ी गला त स्किन इफेक्ट कोन हो बढ़ी जिवो ना कमिवो ना समान रहबो ना नॉन ऑफ द अबव तो राइट आंसर हमरा कोन जोडी बढ़ी जिवो सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ले हमर स्किन इफेक्ट कोन हो बढ़ी जिवो The next question को जिबा कुछ if spacing between conductor decrease गोटे कंडक्टर दिटा भीतर जदी ए स्पेस हमर गैप ता यदि कमी जिवो त इंडक्टेंस ऑफ द लाइन कोन हो बढ़िबो ना कमिबो ना समान रहबो ना नॉन ऑफ द अबव त राइट आंसर एटी हमर कोन हो स्पेस कमिले हमर इंडक्टेंस को हो कमी जिवो त नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा if the conductor diameter decreases conductor जदी गुटे normal suppose conductor a diameter जदी हमरो diameter जदी decrease हला ये जो diameter ता गुटे तार रो normal ता cross section में ये जो diameter जदी तार decrease हला then the inductance of the line कोन हो remains same रहइबो ना कमी जिवो ना बढ़िबो ना नॉन ऑफ द अबव त राइट आंसर हमर कोन हो जदी डायमीटर कमिला ताले इंडक्टेंस कोन हो पिला माने एठी बढ़ी जिवो द स्किन इफेक्ट इंक्रीजेस द स्किन इफेक्ट कोन इंक्रीज करे रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन ना इंडक्टेंस ऑफ द लाइन ना कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन ना ऑल ऑफ द अबव त राइट आंसर है जो हमर स्किन इफेक्ट इंक्रीजेस resistance of the line जोटाला ऑप्शन ए then next question in a DC transmission the skin effect is DC transmission में skin effect कौन था बड़ा था ना छोटा ना जीरो डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज हम लोग के DC ट्रांसमिशन केस रे हमर स्किन इफेक्ट सब बळे रहइबो जीरो जोटाला ऑप्शन सी The next question transposition of transmission line is done to transposition of a transmission line done to reduce line loss balance line voltage drop na reduce skin effect na reduce corona तो the right answer कौन है जो balance कौन करे line voltage drop को balance करे option B the right answer the next question the presence of earth wire in case of overhead line कौन हो से कुछ जेतला हमरो earth wire रो presence रहबो in case of overhead line से कौन हो increase line capacitance पड़िबो line capacitance कमिबो
लाइन इंडक्टेंस बढ़िबो डिक्रीजेस लाइन इंडक्टेंस एठी कमिबो ताले राइट आंसर एठी कोन हबो जदि हमर अर्थ वेयर रहला इन प्रेजेंस रहला इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन केस ताले एठी हमर कोन हबो increases its line capacitance जोटा ला ऑप्शन ए the next question को जीवा कुछ the power loss in overhead transmission line is mainly due to कुछ power loss in overhead transmission line mainly due to कुछ पे inductance of the line na capacitance na resistance of the line na none of the above so the right answer is resistance of the line power loss जो केस रे the next question so the charging current due to line capacitance depends upon का ऊपर डिपेंड करे मेनली लाइन कैपेसिटेंस ऊपर ना लाइन वोल्टेज ऊपर ना सप्लाई फ्रीक्वेंसी ना ऑल ऑफ द अबव तल द राइट आंसर इज हमरो एटी लाइन कैपेसिटेंस ऊपर भी डिपेंड करे लाइन वोल्टेज ऊपर भी डिपेंड करे सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऊपर भी डिपेंड करे त राइट आंसर इज हमरो ऑप्शन डी The next question bundled conductor are used to mainly bundled conductor mainly use कुछ में करा जाए reduce line inductance and capacitance कमेवा पे किंबा inductance और capacitance बढ़ेवा पे ना reduce corona loss और line inductance किंबा none of the above the right answer हमारा mainly कुछ में use करा जाए mainly reduce corona loss और inductance line inductance Then next question को जीवा the inductance of the line will small when inductance of the line will be small केते बळे हमरो जतल GMD जहाय GMR जहाय किंबा बोथ GMD और GMR जहाय किंबा GMD इज लो बट GMR जहाय तल द राइट आंसर एटी कोन हो तल द राइट आंसर एटी हमर कोन हो जतल GMD लो रहबो GMD माने हमरो ज्योमेट्रिकल mean distance जतल geometrical mean distance low रहिबो but GMR माने geometrical mean radius high थिबो सेते बला ये small रहिबो कोटा माने inductance of the line will be जतल GMD low थिबो आ GMR high GMD हला geometrical mean distance आ GMR हला geometrical mean radius एटा radius एटा हला distance The next question को जीवा if lagging power factor of load decreases the line losses will be सेट कोन कोची जते lagging power factor of load जते कोन कमी जीवो तल तो line losses will be कोन हो ना बढ़िबो ना कमिबो ना सेम रहइबो ना none of the above तल द राइट आंसर एटी कोन जीवो बढ़ी जीवो The next question The capacitance of a transmission line is a shunt element, na series element, na shunt series element, na none of the above. So the right answer is the capacitance of a transmission line is a shunt element. That is option A. The next question goes the length of a short transmission line is up to about short transmission line में कितने distance वाला था 120 किलोमीटर 280 किलोमीटर 400 किलोमीटर तो द राइट आंसर इज 80 किलोमीटर द नेक्स्ट क्वेश्चन द चार्जिंग करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन द चार्जिंग करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन चार्जिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन lags the voltage by 90 degree na leads the voltage by 90 degree leads the voltage by 45 na lag by 45 degree so the right answer is amara leads the voltage by 90 degree the next question in a generalized constant a or d of the transmission line here तो दीटा जो डायरेक्शन देला एटी तार से कोन देखौ जेठी नॉर्मली नो डायमेंशन ना डायमेंशन ऑफ ओम ना डायमेंशन ऑफ मोहो ना नॉन ऑफ द अबव तो द राइट आंसर है जो हमर एटी जनरली कांस्टेंट केस रे हमर किछि डायमेंशन न थाए जोटाला ऑप्शन ए
Then next question को जीवा the efficiency of a transmission line. So the efficiency of transmission line increases with the decrease in the load of PF kimba is independent of load PF, increase with the increase in the load of PF kimba komme au decrease increase with the load of PF. So the right answer is the efficiency of transmission line increases with the increase in the load power factor. Option C. The next question. As the transmission voltage increases, the percentage of resistance drop कौन होगा? से कुछ transmission voltage जब increase है तब the percentage of resistance drop कौन होगा? ना बढ़िबो, ना कमिबो, ना none of the above, ना समान रहइबो. तब the right answer is कमी जीवो. Voltage बढ़िले तर percentage of resistance drop कौन होगा? कमी जीवो. Then in transmission line we generally use cross arm. जो ट्रांसमिशन लाइन ने जो क्रॉस आर्म यूज करा जाए से कुछ रहता है मेल्ट तैयारी रहता है कुछ रहे एल्युमिनियम ना कॉपर ना स्टील ना आरसीसी तो द राइट आंसर है जो हमारा मेनली स्टील ले तैयारी रहता है क्रॉस आर्म. द नेक्स्ट क्वेश्चन इन ओवरहेड लाइंस वी जनरली कौन यूज करते कॉपर कंडक्टर ना सीएसआर कंडक्टर ना एल्युमिनियम कंडक्टर ना नॉन ऑफ द अबव. ओवरहेड लाइन केस में जनरली कौन करते एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करते ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर जोटा ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन द इन्सुलेटर में फेल ड्यू टू इन्सुलेटर केतବେଳେ फेल करबो तो शॉर्ट सर्किट हेले ना फ्लैश ओवर हेले ना डिपोजिशन ऑफ डस्ट हेले ना एनी वन ऑफ द अबव. तो द राइट आंसर कोन होबो एठी इन्सुलेटर केतବେଳେ फेल हो मे बी शॉर्ट सर्किट हेले भी पारे कि फ्लैश ओवर हेले हे पारे ना डस्ट जमिल तेणुक राइट आंसर कौन हम ये एनी ऑफ द अबव. द नेक्स्ट क्वेश्चन द कंडक्टर्स यूज्ड इन हाई टेंशन ओवरहेड लाइन आर स्टैंडर्ड सॉलिड बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following insulator are used 132 kV transmission line pin type na dish type na sector type na both A and B. तो ये कौन होगा राइट आंसर मेनली हमारा 132 kV ट्रांसमिशन लाइन ने हमारा डिश टाइप इंसुलेटर यूज करा जाए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को मटेरियल हमारे में कॉमनली यूज करा जाए माइका ना ग्लास ना पीवीसी ना प्रोक्लेन. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेटर विल बी यूज्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज चेंज्ड. क्यों टाइप रे इंसुलेटर हम व्यवहार करिया जब तार डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन जदी चेंज हो गला तो स्ट्रेन टाइप ना पिन टाइप ना सस्पेंशन टाइप ना सेकल टाइप. तो द राइट आंसर इज हमरा स्ट्रेन टाइप रे हम एटी यूज करिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन द इफेक्ट ऑफ आइस डिपोजिशन ऑन द कंडक्टर इज टू बी इंक्रीज द कोन एठी हमरो इंक्रीज करिवो कंडक्टर वेट ना ट्रांसमिशन लॉस रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो स्किन इफेक्ट. हमर कंडक्टर ऊपर बरफ जमिला तार एटी कोन हो मेनली कंडक्टर वेट बढ़ी जीवो. द नेक्स्ट क्वेश्चन द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट अफेक्टेड ड्यू टू वेट ऑफ कंडक्टर ना करंट थ्रू कंडक्टर ना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ना आइस डिपोजिशन ऑन कंडक्टर. तो द राइट आंसर इज एटी हमर current through conductor. The next question को जीवा the string efficiency of high voltage AC transmission line is about कितने 80% ना 100% ना 40% ना 10%. the right answer है कितना होगा हमारा 80%.
A 3-wire DC distribution system makes available से कुछ गोटे 3-wire DC distribution system जो voltage available हमर करे केतरा voltage ना गोटे voltage ना दुईटा voltage ना तीनटा ना none of the above तो राइट आंसर हमर एटी जीवो DC distribution जो 3-wire रो दुईटा voltage जोटाला ऑप्शन बी. The next question, a line which connect a consumer to distributor is called. कुछ line जो line हमरो connect क्या करे ना consumer to distributor ग्राहक को जे सप्लाई करे ताकू कौन कहते feeder ना distributor ना serviceman ना none of the above. चलता right answer एटी जीवो हमरो serviceman. The next question, an SC employs secondary distribution system. केते से दिया हमरो voltage की 3-wire system दला 11 के भी 3 phase 3-wire system 6.6 के भी 3 phase 3-wire system किमा 3.3 के भी 3 phase 3-wire system नले 400 नले 230 volt 3 phase 4-wire system. The right answer हमरो को हम SC employs secondary distribution system हमरो ऑप्शन डी है जो एठी. The next question को जीवा कुछ 3 phase DC system the current of positive outer is केते ला 200 ampere और negative outer रे केते देला 100 ampere. तो current in the neutral wire केते तले हमर पॉजिटिव एम्पियर रु एटा माइनस कर दिले हमर पळे आछिबो न्यूट्रल वायर तले हमर I1 केते हला एटा ला I1 200 एम्पियर माइनस I2 इक्वल टू हमर आजिबो कोन ना न्यूट्रल वायर जो करंट इन द न्यूट्रल वायर तले 200 माइनस 100 इक्वल टू हमर केते गला 100 एम्पियर तले हमर करंट इन द न्यूट्रल वायर केते हिजबो 100 एम्पियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज जनरली कनेक्टेड. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली केमति कनेक्टेड हुए डेल्टा डेल्टा ना डेल्टा स्टार 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 डेल्टा. राइट आंसर है जो सोल मन के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर केस रे डेल्टा स्टार कनेक्टर हुए जोटाला ऑप्शन बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ऑन को मेजर पार्ट रे हमरो अधिक इन्वेस्टमेंट लागे हमरो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे कंडक्टर ना पोल ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर हमर एटी जो मेजर इन्वेस्टमेंट लागे हमर सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीव द मोस्ट रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज कोटा मोस्ट रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन हम निम्नलिखित मध्यरु इंटरकनेक्टेड सिस्टम ना रेडियल सिस्टम ना रिंगमैन सिस्टम ना नन ऑफ द अबव. The right answer है interconnected system most reliable. The next question को जीवा the voltage drop in the main consideration while designing a कोटा को डिजाइन कला मेन वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडरेशन करते हैं फीडर ना डिस्ट्रीब्यूटर ना सर्विसमैन ना नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर. The next question in the interconnected system interconnected system the reserve capacity of the system कौन हुए इंटरकनेक्टेड सिस्टम रे हमर रिजर्व कैपेसिटी कौन हुए ऑप्शन दिला रिमेन सेम रहइबो ना कमी जीवो ना बढ़ी जीवो ना किछि नु. द राइट आंसर है जो हमर एठी
बढ़ी जीवो रिजर्व कैपेसिटी जोटा इंटरकनेक्टेड सिस्टम रे। Then next question, a line which connects distributor to substation, कोठुना डिस्ट्रीब्यूटर रु सबस्टेशन को ताको हमें कौन कहते, सर्विसमैन, डिस्ट्रीब्यूटर ना फीडर ना नॉन ऑफ द अबव। ताले ता राइट आंसर हे जो हमर जोटा मन के डिस्ट्रीब्यूटर रु सर्विस सबस्टेशन रेले ताको हमें कौन कहते ना फीडर, देला ऑप्शन सी। The next question, a three-phase 4-wire AC system unbalancing is caused due to the connection of three-phase 4-wire system जो unbalancing हुए तो main कारण कौन, को connection single phase load पाई ना three phase induction motor पाई synchronous condenser पाई ना none of the above। तो the right answer है जो हमारा single phase load पाई होता है, तो ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, द बल्क पावर कंज्यूमर्स आर सप्लाइड एट, बल्क पावर हम सप्लाई करे छै केते रे, 66 केवी ना 11 केवी 230 केवी ना 33 केवी। ताले त राइट आंसर हे जो हमर एठी 11 केवी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in primary distribution line the earth wire is placed, primary distribution line में earth wire हमर कोड प्लेस करा जाए primary distribution केस रे, कुछ above the phase conductor ऊपर below the phase conductor तले in between the phase conductor किंवा phase conductor मझी रे। चल ता राइट आंसर एटी कोन हबो, सोल मन कि हमरा अर्थ वायर जो प्लेस करा जाए मेनली बिलो द फेज कंडक्टर तले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, as compared to underground system the overhead system is, कुछ अंडरग्राउंड सिस्टम तुलना रे ओवरहेड सिस्टम कौन अधिक, कुछ मोर एक्सपेंसिव अधिक खर्चदायक, लेस फ्लेक्सिबल किंबा मोर फ्लेक्सिबल किंबा नॉन ऑफ द अबव। द राइट आंसर है जो हमर एठी as compared to underground system overhead system is more flexible। The next question, as compared to overhead system on the underground system, it's a question टे बुले देला एठी लगी सी कहले ओवरहेड सिस्टम तुलना रे अंडरग्राउंड सिस्टम कोन माने अधिक कॉस्टली, पैसा अधिक होते लागे, हैज लेस चांस इन फॉल्ट कम चांस रे कि त्रुटि होबार, किंबा हैज मोर यूजफुल लाइफ किंबा ऑल ऑफ द अबव। तल द राइट आंसर एटी जीवो अंडरग्राउंड सिस्टम मींस मोर कॉस्टली, हैज लेस चांस फॉल्ट से कम फॉल्ट बारे कारण जेतु माटी तले रहउछि से। नेक्स्ट has more useful life, तीनटा तेणु द राइट आंसर इट इज हमरो ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन, when the length of cable increases its capacitance कम, बट जे लेंथ जदि हम केबल लो बढ़ी गला तल कैपेसिटेंस कम कमी जीवो ना बढ़ीबो ना समान रहइबो ना नॉन ऑफ द अबव। तल द राइट आंसर इज कोन हमर एठी बढ़ी जीवो, जदि लेंथ बढ़िला केबल लो तल कैपेसिटेंस कम हो बढ़ी जीवो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग ऑफ केबल्स इज carried out to achieve economy, reduce overall cable diameter, have uniform stress distribution किंबा all of the above। तल द राइट आंसर एटी हमर हिजबो ऑप्शन डी। The next question, which is the minimum dielectric stress in a cable is, which is dielectric stress कोठी केबल लो मिनिमम रहइबो, कंडक्टर सरफेस ऊपर किंबा सेंटर ऑफ कंडक्टर लेट साइड रे रहबो ना नॉन ऑफ द अबव। द राइट आंसर हमर एटी हिजबो ऑप्शन सी।
minimum dielectric stress. The next question, in a three-wire DC system, the area of cross section of neutral wire is generally, so three-wire DC system re, the area of cross section of neutral wire is generally half that of conduct outer किंबा हाफ हो किंबा डबल हो आउटर जंप किंबा सेम रहा आउटर सहित तो राइट आंसर कौन हो हाफ रोटा ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, ए लाइन फ्रॉम व्हिच लोड्स आर टैप्ड ऑफ इज कॉल्ड, तो कौन कहते फीडर कहते ना डिस्ट्रीब्यूटर ना सर्विसमैन ना नॉन ऑफ द अबव, तो राइट आंसर ये डिस्ट्रीब्यूटर कहते. Which of the following distribution system is used for combined power and lighting load? निम्नलिखित मध्यरु केउ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउ यूज करा जाय कोथपे कंबाइंड पावर आउ लाइटिंग लोड पर. ऑप्शन देला सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम, 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम, 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम. द राइट आंसर एटी हमर कोन हिजो कंबाइंड पावर और लाइटिंग लोड पे हम यूज करन सब बळे 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम. The next question, insulating material for cable should have, insulating material जो हम यूज करा जाए केबल मान करे तर कौन थिबा दरकार, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस ना हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ना हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ना ऑल ऑफ द अबव. सो मन के तंकर केबल ले मेनली हाई इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज करा तर हाई इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस रहा दरकार प्लस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई दरकार प्लस हाई मेकानिकल स्ट्रेंथ भी दरकार. तेणुकर राइट आंसर ये ऑल ऑफ द अबव. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड, द राइट आंसर ये हमर हो ऑप्शन सी. समस्त जानी क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी मोटर the magnetic current lags the voltage by 90 degree na leads the voltage by 90 degree na is in the phase voltage na none of the above. Then the right answer is amara lags the voltage by 90 degree. Kotan AC motor. The next question, the low lagging power factor in AC power system is due to, which low lagging power factor in AC system is due to kalang na induction motor पे ना arc lamp पे ना bearing load on the system पे ना all of the above. तल the right answer ये हमर हो all of the above. The next question, the low lagging power factor results in, low lagging पावर फैक्टर कौन रिजल्ट, लार्ज कॉपर लॉसेस ना पुअर वोल्टेज रेगुलेशन ना रिड्यूस्ड हैंडलिंग कैपेसिटी ना ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर कौन है तार लार्ज कॉपर लॉसेस हुए, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, रिड्यूस्ड हैंडलिंग कैपेसिटी. तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, the most common fault in overhead distribution system, mainly जो common fault हुए overhead distribution line में, तो ऑप्शन देला फेज टू फेज फॉल्ट ना वन फेज टू आर्क फॉल्ट ना ऑल फेजेस शॉर्ट सर्किटेड ना नॉन ऑफ द अबव. तो मेन एप्रोप्रिएट आंसर ये जीवो वन फेज टू आर्क फॉल्ट. एटा मेन कॉमन फॉल्ट हुए इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. The next question को जीवा, the ring main system is used in power distribution because it, तो कौन जो ring main system यूज करा जाए power system में तो मेन कारण. ऑप्शन ला is reliable for continuity supply of, gives better voltage regulation, results in less feeder losses किंबा none of the above. तो राइट आंसर ये हमारा कौन होगा ऑप्शन डी. The next question, the
current in the radial distributor will be maximum at the current amar radial distributor maximum को जगह रहो source end of the distributor na midpoint of the distributor na provide mechanical strength na none of the above. So the right answer is amar source end of the distributor city maximum रहिबो. The next question, the interconnected distribution system is more reliable because of use of interconnected system distribution system so more reliable हम तक कहते तार मेन कारण का heavy size of conductor और बड़ा size पे conductor रा two or more source of supply ना higher load current ना none of the above. तो the right answer is D हमरे जो two or more source of supply ସେଥିପାଇଁ more reliable कहते हम. The next question को ଯିବା. The voltage in a radial distributor will be maximum at. तो voltage in a radial distributor maximum को जगह रहो. The distribution substation, the midpoint of the distributor, the end of the distributor, none of the above. तो the right answer is हमारा minimum को जगह रहो. At the end of the distributor. So मन रखिए voltage in a radial distributor केस रे minimum को रहो. At the end of the distributor. The next question, in AC system addition and subtraction of current are done. In AC system में हमारे जो addition और subtraction of current are done mainly कुछ vectorially ना arithmetically ना both A and B ना none of the above. The right answer is what हमारा option A. The next question बुझियो, voltage of primary distribution system केते primary distribution system mainly voltage केते रहे 400 volt 33 kV 230 volt 11 kV मन के primary distribution system में हमारा 11 kV voltage हुए. The next question, which of the distribution system is used for domestic load? चलता है हमारा राइट आंसर कौन होगा which of the domestic load में हमारा वो distribution system basically यूज करा जाए 3 phase 3 wire ना 1 phase 2 wire system ना 3 phase 4 wire system ना none of the above. चलता राइट आंसर हमारा ये जीवो 1 phase 2 wire system. Then which of the distribution system is used for balanced load? क्यों distribution system यूज करा जाए balanced load में? ऑप्शन है 1 phase 2 wire system ना 3 phase 4 wire system ना 3 phase 3 wire system ना none of the above. तो राइट आंसर है हमारे जो 3 phase 3 wire system हमारे यूज करा जाए कुछ पे balance load में हमारे यूज करा जाए. The next question, कुछ power distribution by cables is generally adopted for the length. केबल में जो पावर मेनली डिस्ट्रीब्यूशन जनरली ता लेंथ केते करा जाए लेस देन 10 किलोमीटर एबव 100 किलोमीटर लेस देन 50 किलोमीटर एबव 200 किलोमीटर. चलता राइट आंसर है हमर केता लेस देन 10 किलोमीटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट्स आर यूज्ड इन केबल टू कौन बाय यूज करा जाए मेनली provide proper insulation, prevent ingress of moisture, provide mechanical strength, none of the above. Mainly हमरो एठी provide करा जाए moisture को prevent करिया पे और यूज हम करा जाए. इनका राइट आंसर इट इज हमरो ऑप्शन बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, the domestic load that has unity power factor is. कार unity power factor domestic load unity क्यों कार था हमारा unity power factor? फैन ना मिक्सचर ना ट्यूब ना फिलामेंट लैम्प. द राइट आंसर इज हमारा unity power factor कार था फिलामेंट लैम्प.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज बियॉन्ड 600 केवी तो केबल यूज बियॉन्ड 600 केवी रे हम को केबल यूज करंदी बेल्टेड टाइप ना एसएल टाइप ना ऑयल फील्ड ना नन ऑफ द अबव तल त राइट आंसर है जीवा हमर एठी ऑयल फील्ड हम एठी यूज करंदी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा in the event of fault line can be opened quickly by का द्वारा जल्दी हम कर पारे सर्किट ब्रेकर ना फ्यूज ना जियो स्विच ना ऑल ऑफ द अबव द राइट आंसर इज हमरो फ्यूज ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज रेटेड केते देइछि तार रेटिंग 100 kVA तार पचार जी द मैक्सिमम एक्टिव पावर दैट इट कैन सप्लाई तो केते मैक्सिमम एक्टिव पावर ये सप्लाई करि परिबो ऑप्शन देला 200 किलोवाट 100 किलोवाट 75 50 तो राइट आंसर हमर केते हबो ऑप्शन बी 100 किलोवाट से सप्लाई करि परिबो मैक्सिमम द नेक्स्ट क्वेश्चन in a distribution transformer isolating and protective device are provided कुछ गोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मोर को आइसोलेटिंग और प्रोटेक्टिव डिवाइस प्रोवाइडेड को साइड रे प्रोवाइड करता है ऑप्शन दियाला एलटी साइड ओनली एसटी साइड ओनली बोथ एलटी और एसटी किबा नन ऑफ द अबव तार राइट आंसर इज बोथ एलटी और एसटी साइड चलिए ये हमारा आंसर है बोथ लो टेंशन और हाई टेंशन साइड ऑप्शन सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा as the thickness of insulation of a cable increases कुछ गोटे insulation cable जदि तार thickness कोन होला बढ़ी होला its insulation resistance कोन हो बढ़िबो ना कमिबो ना समान रहइबो ना नन ऑफ द अबव त राइट आंसर कोन हो बटी तार insulation resistance बढ़ी जो thickness बढ़िले तार resistance भी बढ़िबो the next question as the thickness of the insulation of a cable increases its capacitance सेठी कोनतला हमर thickness बढ़ले त resistance एठी त पचे capacitance thickness बढ़ले capacitance ऊपर कोन फरक आसीबो बढ़िबो ना कमिबो ना समान रहइबो ना नन ऑफ द अबव capacitance सेम भी बढ़िबो the next question को जीवा in a capacitance grading of cable we use कौन यूज करन सिटी वन डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग डे a large number of dielectrics or 2 or 3 dielectrics or none of the above the right answer is हमर option C 2 or 3 dielectrics the next question in capacitance grading of cables the dielectric of highest permittivity is could रहो तर हाईएस्ट परमिटिविटी को जगह रहो नियर द कोर इन द मिडिल फारदेस्ट अवे फ्रॉम कोर दूर रे किबा नन ऑफ द अबव तल त राइट आंसर हे जिवो हमरो नियर द कोर पकरे तर हाईएस्ट परमिटिविटी रहइबो द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवो फॉर द सेम शेप पोटेंशियल द साइज ऑफ ग्रेडेड केबल इज सेम शेप पोटेंशियल पे साइज ऑफ ग्रेडेड केबल कौन रहइबो लेस देन नॉन ग्रेडेड केबल कम रहइबो नॉन ग्रेडेड केबल जो किबा अधिक रहइबो नॉन ग्रेडेड केबल जो किबा सेम रहइबो नॉन ग्रेडेड केबल सहित किबा नन ऑफ द अबव तल त राइट आंसर सब कोन जिवो एठी हमर सब लेस रहइबो ता जो कम रहइबो का जो नॉन ग्रेडेड केबल नेक्स्ट है the requirement of good distribution system is requirement good distribution system कौन पे proper voltage पे ना availability of power on demand जो हमर डिमांड जेतोले से अनुसार पावर availability किबा reliability किबा all of the above तल त राइट आंसर इज तीन टांग रहबो तेन करी हमर all of the above the next question को जिबा The insulating material most commonly used for power cable हमर जो insulating material हिसाब रे power cable हमर कोटा हमर most commonly हम यूज करंती
PVC, paper, rubber, none of these above. The right answer is हमरो insulating भाव में PVC एटी यूज करंती. The next question, which of the distribution system is used for domestic load? निम्नलिखित मध्यरु क्यों distribution system का हमें यूज करंती domestic load रे? 3 phase 4 wire system ना single phase 2 wire system ना 3 phase 3 wire system ना none of the above. The right answer हमरो एटी जीवो option B, 1 phase 2 wire system. The next question, as compared to overhead system, the maintenance cost of underground system कितना हो? Option देला very high, about the same, very low, none of the above. तो the right answer एटी कौन है जो very low maintenance cost as compared to हमारा underground तुलना में overhead. The next question, in AC system voltage drop is due to AC system में voltage drop क्यों कारण होता है? Resistance alone ना inductance alone ना capacitance ना all of the above. Voltage drop mainly तीन टाइम करे हमरो होता है. तो right answer is option D. The next question, a booster is connected in dash with the feeder. और booster जो connected करा था कोथरे हम सीरीज रे ना पैरेलल ले ना सीरीज पैरेलल ले फीडर सहित. तो द राइट आंसर है जो सब मन के बूस्टर जतला हमर फीडर सहित कनेक्शन कराय था से तळे से सीरीज रे कनेक्शन ही थाए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बूस्टर इज ए बूस्टर गोटे कोन डीसी शन जनरेटर डीसी कंपाउंड जनरेटर डीसी सीरीज जनरेटर नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर है जो बूस्टर इज ए DC series generator. Option C. The next question, in a 3-phase balance load, each phase has which would 3-phase balance load रे प्रत्येक phase has तन कौन था same impedance but different PF, same impedance and PF, same PF but different impedance. None of the above. So the right answer कौन है जो एटी? Option B, same impedance and PF. The next question, loop test in cables cannot locate the loop test जो करा जाए केबल ले कौन से locate करी न पारे? Open circuit fault ना short circuit fault ना earth fault ना none of the above. Loop test mainly हमारा open circuit fault को से locate करी पारे नहीं. The next question, a booster is inserted in the circuit to booster हमर जो circuit रे use करा जाए तो main purpose कौन circuit रे reduce current कमे दबो ना current बढ़े दबो ना reduce voltage drop कुछ कम कर दबो ना compensate for voltage drop. तो the right answer एटी कौन है जीवो? Option D, compensate for voltage drop. The next question, in cable the electrostatic stress is cable कौन था? Maximum at conductor surface, minimum at conductor surface, maximum at the stage, same at the conductor and stage. The right answer कौन है जीवो? Option A, maximum at conductor surface. The next question, the load on 3-phase 4-wire distribution are usually जो load हमर जो रहते हैं 3-phase 4-wire distribution ने normally कौन balanced ना unbalanced ना either A or B balance ही परियो तो unbalanced किंबा none of the above. तो the right answer हमर वाला सब बड़े 3-phase 4-wire system रे unbalanced load थे. The next question, the point of minimum potential with the point of minimum potential of a uniformly loaded DC distributor field with equal voltage at both ends lies at both end midpoint रे ना either गोटे साइड रे ना 2/3 distance from one end ना none of the above. तो the right answer हमारे जीवो एटी
मिड पॉइंट रे रहइबो the next question the losses that occur cables are cable हमर जो losses हुए ताको ऑप्शन देला copper losses in conductor ना hysteresis losses in dielectric ना eddy current losses in sheath ना all of the above then the right answer is हमर hysteresis losses in dielectric when all the three phases are short circuited the current through the system is कोची जेतोले सब तीनटांक फेज शॉर्ट सर्किट हे जिवो तल करंट हमर कोन होबो थ्रू द सिस्टम रे जीरो होबो ना लो हे जिवो ना वेरी लार्ज होबो ना नन ऑफ द अबव तल द राइट आंसर हे जिवो हमर तो तीनटांक शॉर्ट सर्किटेड हे जिवो सेतल वेरी लार्ज होबो द नेक्स्ट क्वेश्चन the most common fault on an overhead transmission line is so mainly common fault कोटा रुए हमर overhead transmission line में single line to ground fault three phase short circuit fault double line to ground fault and line to line fault then the right answer is option A single line to ground fault the next question को जिबा the fault on a power system that gives symmetrical fault current is कोची जो fault हमर रोची कोथन ना power system रे that gives a symmetrical fault current is तल सेटा कोटा होची हमर line to line fault ना three phase short circuit fault ना single line to ground fault ना none of the above तल the right answer is हमर एटी three phase short circuit fault the next question को जिबा क्वेश्चन दिला 1000 kVA transformer has reactance केते दिला 5% its reactance at 2000 kVA base केते होबो ताले हमरो परसेंटेज बाहर करिबा त केते परसेंटेज रहउची ताले हमरो kVA रो परसेंटेज रो फार्मूला को बेस kVA केते तर बेस अछि kVA रे डिवाइड बाय हमरो रेटेड kVA पूरा ट्रांसफार्मर रेटेड देता केते रेटेड kVA इनटू हमर जो परसेंटेज देछि एटी केते परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस कलम बाहर कर दबा कोन करिया हमर बेस kVA केते 2000 डिवाइड बाय हमरो रेटेड केते देछि हमरो ट्रांसफार्मर रेटेड केते देछि 1000 गुणा हमर केते परसेंट देछि 5 ताल तक हम सॉल्व कर दबा केते हला 1000 गुणा करले केते 2 2 गुणा 5 हला केते हमरो 10% द राइट आंसर हम केते जो 10% बुझि पले पिले माने फर्स्ट कोन गला हम बेस जति की देछि डिवाइड बाय द रेटेड बेस बाय रेटेड इनटू परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस जो देछि हमर केते परसेंट 5% की 10% जा देथो त गुणी देला हम डायरेक्ट बाहर आसीयो बेस बाय रेटेड इनटू रिएक्टेंस परसेंटेज द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द मोस्ट severe fault on a power system so the main severe fault or power system रे कोटा है three phase short circuit fault and line to line fault na double line to ground fault na single line to ground fault then the right answer हमर एटी जिवो three phase short circuit fault what is severe fault in a power system रे the next question the rating of circuit breaker are generally जो रेटिंग करा जाए सर्किट जनरली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ को बेसिस रे हमें सर्किट ब्रेकर रेटिंग करंती मेनली ऑप्शन देला सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट ना सिमेट्रिकल फॉल्ट सॉरी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट फर्स्ट देला सेकंड ऑप्शन देला सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट किंबा नॉर्मल सर्किट करंट किंबा नन ऑफ द अबव द राइट आंसर इज हमरो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट
ये रे हमें ताको डिसाइड करंती से बेसिस रे हमें ताको सर्किट ब्रेकर रेटिंग हमें डिसाइड करंती। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा reactors are used at various locations in a power system too। reactor रो मेन काम कौन पावर सिस्टम जो यूज करा जाए तो मेन काम कौन इंक्रीज शॉर्ट सर्किट करंट बढ़े दबो किंबा अवॉइड शॉर्ट सर्किट करंट को अवॉइड करिवो किंबा लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट को सी लिमिट कर दो कम कर दबो कि एडजस्ट करिवो। तो द राइट आंसर एटी कोन हो हमरो रिएक्टर रो मेन काम कोन तो राइट आंसर इजबो लिमिट शॉर्ट सर्किट को सी स्टेबलाइज करियो किंबा ताको गोटे पोजीशन को नै आछो जोटा लिमिटेड हे पड़थो लिमिट करबे। The next question, the use of reactors permits the installation of circuit breaker of option देला low rating पाई ना same rating ना higher rating तल ता right answer एटी कोन होबा हमरो तो use of reactor permits the installation of circuit breaker of lower rating कम rating थे। The next question, reactors are connected dash with the system। reactors जो connected है हमको उधर सीरीज रे ना पैरेलल रे ना सीरीज पैरेलल ना नॉन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज वो reactors और मन के हमको उधर सीरीज रे कनेक्टेड करा जाए सिस्टम सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम से कुछ बैलेंस 3 फेज सिस्टम रे कौन था ना ओनली नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज 0 कुछ नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज कोन 0 थिबो किंबा ओनली 0 सीक्वेंस करंट इज 0 सीक्वेंस करंट 0 थिबो किंबा बोथ नेगेटिव और 0 सीक्वेंस करंट 0 रहइबो। त राइट आंसर कोन होबो एठी ना नॉन ऑफ द अबव। थोड़ा मन रखिए गोटे बैलेंस 3 फेज सिस्टम रे बोथ नेगेटिव और 0 सीक्वेंस करंट सब बेले कोन रहइबो 0 रहइबो गोटे ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन द सिलेक्टेड बेस केवीए इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन में जो केवीए का से तो इक्वल होता है दैट ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट टोटल प्लांट कैपेसिटी एनी एब्रिविएटेड वैल्यू ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर हमर इजबो ऑल ऑफ द अबव से लार्जेस्ट प्लांट हो किंबा तार टोटल प्लांट कैपेसिटी एनी एब्रिविएटेड वैल्यू तीनटा ऊपर इक्वल रहइबो। The next question, the positive and negative sequence impedance of transmission line are positive और negative sequence impedance transmission line कौन रहइबो इक्वल हबो ना डिफरेंट हबो ना जीरो ही जीवो ना इनफाइनाइट हबो तल द राइट आंसर एटी हमर जीवो इक्वल हबो। The next question, the zero sequence impedance of circuit of different element of power system is generally कौन हबो जीरो हबो ना इक्वल हबो ना डिफरेंट ना नॉन ऑफ द अबव। कुछ तो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम तो पावर सिस्टम रो डिफरेंट एलिमेंट रो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस कौन रहइबो हमर एटी डिफरेंट रहइबो। The next question, the vector sum of positive sequence current is vector sum of positive sequence current कौन रहइबो हमरो 0 लो इनफाइनाइट नॉन ऑफ द अबव तल द राइट आंसर रेडी जीवो हमरो सब बेले 0 रहइबो। cables and lines are mostly inductive ना capacitive resistive ना none of the above। The right answer हमर एठी हिजिबो cables and lines are mostly resistive। The next question, a short circuit may lead to कौन है पर short circuit हेले हमर कौन है पर excessive current ना fire for explosion
फायर और एक्सप्लोजन ना लो वोल्टेज इन सिस्टम ना ऑल ऑफ द शॉर्ट सर्किट हेले कोन हो ये सब जिन गुड़ा हमर हो एक्सेसिव करंट प्रोड्यूस हो फायर हे पारे जळी पारे कि एक्सप्लोजन हे पारे कि लो वोल्टेज भी हे पारे इन द सिस्टम रे तेन शॉर्ट सर्किट हेले हमर सब जिन ये तीनटा तेन राइट आंसर हे ऑप्शन डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन द impedance of transformers and alternators are mostly impedance and transformer alternator mostly resistive na inductive na capacitive na none of the above then the right answer is kon hobo moro inductive hobo the next question unsymmetrical faults le kon hobo introduce unbalance in the system ro unbalance hobo indicate abnormal condition in the system abnormal condition type of hobo kimba are more frequent than symmetrical fault kimba all of the above so the right answer is option D tinta ank hi hobo the next question is the short circuit KVA is maximum when fault occurs ऑप्शन देला नियर द जनरेटर पाखरे हेले अधिक हबो ना एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन नो लास्ट रे किंबा ट्रांसमिशन लाइन नो मिडिल ले बा मझी रे त राइट आंसर इट हे जिवो नियर द जनरेटर मैक्सिमम हबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन करंट लिमिटिंग reactors in power system have large resistance and low reactance large reactance and low resistance and large reactance and resistance but none of the above so current limiting reactors in power system have kon of answer it large reactance au low resistance is The next question, oil immersed air-cooled reactor are used as current limiting reactors because oil immersed air-cooled reactor हम use करा जाए कोथरे used as current limiting reactor तर main कारण कौन they have higher safety against flashover निया लगेले से मानो ऊपर safety अधिक थाए they have higher thermal capacity तांगर thermal capacity अधिक थाए तारो किंबा ऑयल सर्व्स द पर्पज ऑफ कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल हमर कोन करे कूलिंग और इंसुलेशन पे यूज हे पर किंबा ऑल ऑफ द अबव द राइट आंसर हे हम तीन टांग से करे तन करे ऑल ऑफ द अबव द नेक्स्ट क्वेश्चन द मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स इज वेरी यूजफुल फॉर तो सिमेट्रिकल जो कंपोनेंट्स हमर वेरी यूजफुल कोद पे solving unbalanced three-phase circuit solve करिया पे analyzing the performance of three-phase machinery रो analyze करिवो ता performance केमिति कोन होची किंबा calculating currents resulting from unbalanced fault किंबा current calculate करिवो unbalanced जो fault हेले किंबा all of the above तो राइट आंसर है जो हमरा एठी all of the above तीनटा से करे The next question, the most severe unsymmetrical fault is single line to ground fault, na line to line fault, na double line to ground fault, na none of the above. कौन होगा आंसर है ऑप्शन सी है जो double line to ground fault. The next question, which portion of the power system is least prone to fault? पावर सिस्टम रो क्यों पार्ट रो कम चांस हुए फॉल्ट होबार स्विच गियर ना ट्रांसफॉर्मर ना अल्टरनेटर ना ओवरहेड लाइन तो राइट आंसर हमरे जो अल्टरनेटर जोटी कम चांस था फॉल्ट बारियर द नेक्स्ट क्वेश्चन नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कौन ना इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इक्वल रहइबो किंबा मोर देन द पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस
पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्शन अधिक रहइबो ना कम रहइबो देन पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ना नन ऑफ द अबव तल द राइट आंसर इट इज हमरो इक्वल रहइबो नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस अब ट्रांसफर इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस सहित इक्वल रहइबो कोड पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस then next question zero sequence currents can flow from a line to transformer bank if the winding are in co-condition delta star na star ground star na delta delta na grounded star na delta. So the right answer is option D. The next question series reactors are used to series reactor हम यूज कुछ में करा जाए ना improve transmission efficiency improve करे पे ना improve power factor of power system improve करे पे power system रे ना improve voltage regulation improve करे पे ना bring down fault level within capacity of switch gear तो the right answer है कौन होगा series reactor हम जो यूज करा जाए the right answer is mainly bring down fault level within the capacity of switch gear capacity level ले ताको fault पे हम नहीं आसियो तो the right answer is हमारा option D. The next question in case of unbalanced star connected load supplied from a unbalanced three phase कुछ भी unbalanced star connected load supplied from a unbalanced three phase three wire system load current will consist of ताले एटी हमर load current कोन रहइबो positive sequence component रहइबो ना negative sequence component ना zero sequence component ना only A और B ताले the right answer कोन होबो option D ए दुटा ही रहइबो. The next question zero sequence component in three phase voltage of delta connection is line voltage na zero na root 3 into line voltage na line voltage divided by root 3 तो zero sequence component in a 3 voltage delta connection कौन रहेगा equal to is कौन होगा आंसर एटी line voltage होगा option A. The next question the positive sequence current in a transmission line is positive sequence current जो हम transmission line में mainly कौन रहे always zero रहेगा ना 1/3 of negative sequence current रो 1/3 होगा ना equal रहेगा का सहित ना negative sequence current सहित ना 3 टाइम 3 गुना है जो negative sequence current सहित तो कौन होगा ये हमारा positive sequence current mainly equal रहेगा का सहित to negative sequence current सहित. The next question the magnitude of fault current depends upon fault current रो magnitude का ऊपर depend करे mainly option है total impedance up to fault point ना voltage at fault point ना both A and B ना base के B the right answer is जो हमारा magnitude का ऊपर depend करे mainly total impedance up to fault point से total option A. The next question which portion of the transmission system is more prone to fault कि हमर लिस्ट थिला एटी अधिक देछि कि फॉल्ट होबार चांसेस अधिक थाए अल्टरनेटर ना ट्रांसफार्मर ना अंडरग्राउंड केबल ना ओवरहेड लाइन तो राइट आंसर इज हमर ओवरहेड लाइन ने चांसेस अधिक थाए फॉल्ट बारे. फ्यूज इज फ्यूज गोटे कौन गोटे प्रोटेक्टिव डिवाइस ना करंट लिमिटिंग डिवाइस ना करंट कंट्रोलिंग डिवाइस ना नन ऑफ द अबव तब सो द राइट आंसर हमर एटे हिजिबो फ्यूज इज प्रोटेक्टिंग डिवाइस जोटा हमर प्रोटेक्ट करे ओवरलोड प्रोटेक्शन पे हमर यूज करे. The next question circuit breaker is a circuit breaker गोटे कौन is a current controlling device current control करे ना circuit interrupting device current limiting device ना none of the above. The right answer it is हमारा
circuit interrupting device. The next question, an isolator is designed to open a circuit under. Isolator जो डिजाइन करा जाए to open a circuit under का full load रे ना normal condition पे ना no load none of the above. The right answer is no load, option C. The next question, under normal operating condition the contact of a circuit breaker remains. Normal operating condition में circuit breaker contact कौन हुए, बंद थाए ना ओपन थाए ना अधा बंद थाए ना नन ऑफ द अबव. राइट आंसर, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में सर्किट ब्रेकर हमारा कांटेक्ट होता है बंद थाए, क्लोज थाए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज परफॉर्म्स. फ्यूज कौन परफॉर्म, डिटेक्शन फंक्शन ओनली ना सर्किट इंटरप्शन फंक्शन ओनली ना बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन ना नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज एटी ऑप्शन सी, बोथ डिटेक्शन और इंटरप्शन फंक्शन. The next question, a circuit breaker performs the function of detection only na circuit interruption only na both detection and circuit interruption. So the right answer is our option B. The next question, when a fault occurs in a power system, the circuit breaker, जेतल गोटे पावर सिस्टम रे हमर जेतल गोटे प्रॉब्लम फॉल्ट बाहर तो सर्किट ब्रेकर कौन हुए, ओपन ऑटोमेटिकली, इज ओपन मैनुअली, इज ओपन बाय रिमोट कंट्रोल, नन ऑफ द अबव. जेतल पावर सिस्टम रे गोटे फॉल्ट हेले हमर सर्किट ब्रेकर से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, a circuit breaker is able to open under. जो गोटे सर्किट ब्रेकर केतल ओपन हुए, ऑप्शन देला नो लोड कंडीशन ना लोड कंडीशन थिले ना फॉल्ट कंडीशन ना ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर है जो नो लोड कंडीशन, ता सहित भी लोड कंडीशन ने भी हबो, ता सहित फॉल्ट कंडीशन ने भी हबो. तेन करे हमर राइट आंसर एटी कोन हबो, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, तीन टांग कंडीशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, the device that detects the fault in a power system. जो डिवाइस हम यूज करती जोटा हमर डिटेक्ट करे मेनली पावर सिस्टम रे जो डिवाइस हम यूज करे जाए जोटा कि फॉल्ट डिटेक्ट करे तो कौन कहती, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिले, नन ऑफ दिस. तो कहती रिले, ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, an R is produced when the switch of the high voltage and large current circuit is R केटा हो. आई थिंक तले सर्किट कौन थो, ओपन कंडीशन ने ना क्लोज ना ओपन और क्लोज ना नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर एटी हो जेतल हम कह स्विच ऑफ हाई वोल्टेज एंड लार्ज करेंट सर्किट जेतल ओपन कंडीशन ने सेतल आर प्रोड्यूस हो. The next question, for the same power least size of, same power पे हम least size रो कोड यूज करेंगे, ऑयल सर्किट ब्रेकर ना एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ना SF6 सर्किट ब्रेकर. तलता राइट आंसर है जो हमरा ऑप्शन डी, सेम पावर पे SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करते. The next question, when the circuit breaker operates under fault conditions, कुछ जितने गोटे सर्किट ब्रेकर फॉल्ट कंडीशन में ऑपरेट करे, the greatest noise is produced in, कोटे अधिक नॉइज प्रोड्यूस हुए को ये रे, ऑयल सर्किट ब्रेकर केस रे ना एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर केस रे ना वैक्यूम रे ना SF6 सर्किट ब्रेकर केस रे. चलता राइट आंसर है जो हमरा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रे अधिक हमर नॉइज प्रोड्यूस अंडर फॉल्ट कंडीशन जो डिफेक्ट बाहर से जोर साउंड हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ आर्क ये हमर आर है आर्क, इफ द लेंथ ऑफ आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस कौन हम. सर्किट ब्रेकर जो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ी जाए तो रेजिस्टेंस कौन हम ना कमिज ना बढ़ ना सामान रहा ना नन ऑफ द.
ताले राइट आंसर एटी जो बढ़ी जीवो। The next question, current chopping mainly occurs in कोथरे हुए ऑयल सर्किट ब्रेकर रे ना एयर प्लस सर्किट ब्रेकर ना वैक्यूम रे ना SF6 रे। ताले राइट आंसर इज हमर एटी करंट चॉपिंग मेनली occur कोड हुए एयर प्लस सर्किट ब्रेकर मन रखिबे एटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ सर्किट इंटरप्शन इन फोर्स्ड ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज which is speed कारण सर्किट इंटरप्शन इन ए फोर्स ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। तो स्पीड कौन एट रहो फोर्स ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है स्लो फास्ट मीडियम ना नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इट इज फास्ट रहिबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in a bulk oil circuit breaker the oil actually used for the excitation is about कितने परसेंट टोटल कितने हमरो यूज करा जाए 60% ऑफ टोटल ना 90% ऑफ टोटल ना 40% टोटल ना 10%। तो राइट आंसर है जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर रे हमरो यूज कोन करा जाए जो ऑयल 10% ऑफ टोटल जा थिबो धर 100 थिले तार 10% रो बोले 90 से रहला आ 10% ये रहला। The next question, in low oil circuit breaker the oil performs the function of low oil circuit breaker है oil कौन perform कर oil को हिसाब रे यूज हुए सेठी as insulation ना as extension only ना both insulation and extension ना none of these। the right answer is your option B are extension only। The next question, low oil circuit breaker over bulk oil circuit breaker is that कौन से करे oil circuit oil low oil circuit breaker compare में bulk oil circuit breaker है requires less quantity of oil कम quantity oil दरकार करे किंबा less space दरकार करे ना reduces risk of fire over chances कम करे किंबा all of the above। तो राइट आंसर है जो एटी हमनो low oil circuit breaker over bulk oil circuit breaker तीन टांग सेठी तेणु करी ऑप्शन डी है जो आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग रिजल्ट्स इन कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग कोथरे नॉर्मली शॉर्ट सर्किट हेले ओपन सर्किट ना वोल्टेज सोर्स ना नन ऑफ दिस अबव। The right answer is your voltage source। The next question, the normal practice to specify the making current of a circuit breaker is in terms of कोथरे हमरो peak value term यूज कर ना average value ना RMS value ना none of these above। The right answer is हमरो इटी option A, it is peak value। The next question, which statement is correct? SF6 gas costly, SF6 gas has high dielectric strength, SF6 gas is toxic। निम्नलिखित ताले निम्नलिखित मधुर क्यों टा हमरो ठीक अछि स्टेटमेंट टा। तो राइट आंसर इज जोडी तीन टा गटे से कॉस्टली ता सहित डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक आउ एटा टॉक्सिक भी मध्य SF6 गैस। The next question, when oil circuit breaker operates under fault condition 1 cm³ of oil forms above। तो गोटे oil circuit breaker under fault condition ने हमरो ऑपरेट करे तो 1 cm³ पे oil form केते पे गैस दरकार हो। ऑप्शन ए देला 10 cm³ of gas 15,000 cm³ of gas 1000 cm³ of gas और 100 cm³ of gas। तो राइट आंसर है जो गोटे cm³ फॉर्म पे हमर दरकार 100 cm³ of gas। The next question, the breaking capacity of SF6 circuit breaker is not affected by SF6 circuit breaker जो ब्रेक mainly the breaking capacity का द्वारा affected होई न थाए
weather and moisture, pollution, atmospheric pressure ना all of the above. ये तीनटा ता द्वारा अफेक्टेड होई न थाए आ द्वारा अफेक्टेड होई न थाए आइदर वेदर हो कि मॉइस्चर हो किंबा पोल्यूशन हो किंबा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तेणु कर राइट आंसर कौन हो ऑल ऑफ द अबव. The next question, the relay operating coil is supplied through कोथरे सप्लाई कर ना फ्यूज ना करंट ट्रांसफार्मर ना पावर ट्रांसफार्मर ना नॉन ऑफ दिस अबव. तो द राइट आंसर इट इज हमरो करंट ट्रांसफार्मर. The next question, most of relays on service on electric power system are जो रिले हमर को सर्विस रे यूज करा जाए इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम रे से नॉर्मली को टाइप रो रिले हम यूज करंती इलेक्ट्रॉनिक रिले ना थर्मल रिले ना इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ना नॉन ऑफ दिस अबव. तो द राइट आंसर है जो रिले हम यूज करने मेनली सर्विस ऑन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम रे सेडा सब हमर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले यूज करंती. The next question, an overcurrent relay having current setting 125% is connected to a supply circuit through a current transformer जो देला voltage और current दे देला. तो पिकअप करंट केते पचारछि पिकअप करंट हमर केते हो पिकअप करंट इक्वल टू रेटेड सेकेंडरी करंट इंटू हमर जो सेकेंडरी करंट केते रेटेड सेकेंडरी करंट इंटू करंट सेटिंग हमर करंट सेटिंग केते एटा एक करंट और एक करंट रो गुणफल रे हमर बारी अछि आंसर. तो करंट सेटिंग केते हला ये हला हमर रेटेड सेकेंडरी करंट केते हला हमर एटा देछि 5 एम्पियर 5 गुणा और करंट सेटिंग हमर केते देछि 125% इक्वल टू एटा इज हमर केते 1.25. तो गुणी दिला हमर केते 5 के 5 6.25 इज बुझि बले पिला माने फर्स्ट कोन कले हम पिकअप करंट पे हमर फार्मूला हला हमर रेटेड सेकेंडरी करंट इनटू करंट सेटिंग जो रेटेड सेकेंडरी करंट एठी हमर दे जे ट्रांसफार्मर जो करंट दे दे जे एठी आ एठी हम तारो येटा पाई गेले करंट सेटिंग ता. So the right answer हमर इज ऑप्शन ए. The next question, induction relay are used for AC quantity na DC quantity na both AC और DC na none of these above. The right answer हमर एठी जिवो induction relay हमर AC quantity पे यूज करा जाय. The next question, backup protection is generally used for protection against backup protection कुछ में हमरो mainly यूज करा जाय का against रे ओपन सर्किट ब्रेकर ओपन सर्किट फॉल्ट पे ना शॉर्ट सर्किट ना बोथ ओपन और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ना नॉन ऑफ दिस अबव. तो द राइट आंसर इज हमरो एटी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे हमरो बैकअप प्रोटेक्शन इज जनरली यूज करा जाय. द नेक्स्ट क्वेश्चन, of all the fault occurring in a power system the primary protection operates satisfactorily in केते परसेंट केस रे प्राइमरी हमरो प्रोटेक्शन हुए ऑपरेट करे 10% केस ना 30 ना 20% ना अबाउट 90% केस. ताल द राइट आंसर इज हमरो एटी प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑपरेट्स अंडर अबाउट 90% ऑफ द केस. द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकअप प्रोटेक्शन ऑप्शन देला इज ए सेकेंडरी लाइन डिफरेंस ना ऑपरेट्स व्हेन प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल जेते प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हुए सेतले बैकअप प्रोटेक्शन चले किंबा ऑपरेट्स डिस्कनेक्ट्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द सिस्टम किंबा डिस्कनेक्ट कर दे गुडे सब पार्ट को हमरो किंबा ऑल ऑफ द अबव. तो द राइट आंसर इज बैकअप प्रोटेक्शन तीन टांग केस रे हमरो यूज हुए. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate of rise of resting voltage depends on
क्या ऊपर मेनली डिपेंड कर टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर ना द इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ओनली ना द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ओनली ना बोथ इंडक्टेंस आउ कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम द राइट आंसर एटी कोन हे हमरो ऑप्शन डी बोथ इंडक्टेंस और का सहित कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम द नेक्स्ट क्वेश्चन for the interruption of high voltage and low currents कुछ high voltage और low current interruption पे तो circuit breaker preferred को circuit breaker में यूज करते बेसिकली पर high voltage और low current पे vacuum circuit breaker ना oil circuit breaker ना air blast ना all of the current तो right answer है जो मोर high voltage और low current पे मन के सबले मोर vacuum circuit breaker में यूज करते the next question the current rating of a fuse is 5 ampere then the fuse current will be kete hobo then the right answer is kon option dela 5 ampere 1 ampere 2.5 ampere more than 5 ampere then the right answer is jo eti amara more than 5 ampere karan 5 ampere jo deichi 5 ampere ta seta la ta rating jo hisab re ta jo normally अधिक हो कारण जो 5 एम्पियर जो रेटिंग हमर था नॉर्मली सेती करंट रे ताच अधिक से आज यूज कर कारण 5 रेटिंग रे से नॉर्मली हमर ओवर रेटिंग हला के मेल्टिंग तले हाई ताच हम था सेटा ला तर ये पॉइंट सेती ग्राम रे ये जे हम सब मन के जेती रेटिंग जोटा था ताच हम से नॉर्मली अधिक था करंट फ्यूजिंग करंट रे कारण नले 5 एम्पियर रे से मेल्ट हे जे The next question, the fusing factor is kete always 1 na always more than 1 na always less than 1 na none of the above. So like fusing factor of मन रखो always more than 1 रहबो. The next question, the operating time of a fuse about kete समय हमारा operating time fuse रो 0.022 second 1 second ना 0.8 second ना 1.5 second ता राइट आंसर है जो 0.002 second. The next question, the operating time of a circuit breaker केते होबो त operating circuit breaker जो fuse रहला 0.02 circuit breaker ता चम कम 0.001. The next question, the advantages of a high rupturing capacity HRC cartridge fuse is that it does not HRC रो fuse रो main कौन था option देला does not have deteriorative with age has high speed of operation is quite cheap किंबा all of the above ये टाइप माने फर्स्ट ऑप्शन देला से डेटोरेटिव माने डिके हबोनी विथ द टाइम बढ़ला सहित किंबा हाई स्पीड ऑपरेशन क्वाइट चीप किंबा राइट आंसर है जो हमरटी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तीन टांगो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्यूज एलिमेंट इज जनरली मेड कोथरे स्टील ले ना ब्रास ना सिल्वर ना आयरन ताल द राइट आंसर है जो हमरो फ्यूज एलिमेंट कोथरे तैयार होता है ना silver. The next question, as compared to circuit breaker the breaking capacity of a fuse circuit breaker तुलना रे हमर breaking capacity fuse कोन रहबो कम रहबो ना अधिक रहबो ना सेम रहबो ना आंसर कोन हो प्लान रे सबले लेस रहबो. The next question, the time current graph of a fuse has a linear characteristic, is in circle, has inverse characteristic, किंबा none of these. So मन के time current graph हमारा has inverse characteristics, correct? Inverse characteristics था. The next question, a fuse should have low melting point, na high conductivity, low cost, all of the above. तो राइट आंसर है जो एठी तीन टांग से लो कॉस्ट रे दरकार हाई कंडक्टिविटी भी थाए और
लो मेल्टिंग पॉइंट भी थाए। The next question, the present trend is to use silver for fuse because कौन पे हमें मेनली एबे जो सिल्वर यूज करछ फ्यूज रे द मेन कारण इट इज फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, डज नॉट डिटोरेट व्हेन यूज्ड इन ड्राई, has high conductivity किंबा ऑल ऑफ द तर तीनटा को हाल रोची तेन को राइट आंसर है हमरो डी। तार हाई कंडक्टिविटी भी रोची, डज नॉट डिटोरेट विथ यूज इन ड्राई, ड्राई रे से माने तार डिटोरेट डिके होबनी, is free from oxidation. Fuse are used in a circuit where fuse हमारा circuit यूज करने क्यों ना frequent operation are not expected किंवा frequent operation are expected किंवा both है भी none of the above. The right answer is हमारा option A. The next question, as compared to circuit breaker, a fuse circuit breaker तुलना में गोटे fuse कौन कम cheaper मान कम पैसा ना costlier ना जेबर same cost किंबा none of the above. ताल the right answer is हमारा एटी circuit breaker तुलना में fuse है हमारा cheaper. During which part of a fault current wave the fuse melt? हमर जो करंट वेव रे फ्यूज जो मेल्ट हुए को जगह रे हमर हुए ऑप्शन देला वेल बिफोर द फास्ट पीक जितल फास्ट पीक हे जबो ता पूर्वरु हमर फ्यूज मेल्ट हे जबो किंबा व्हेन द फास्ट पीक इज रीच जितल फास्ट पीक हे जबो किंबा आफ्टर फास्ट पीक किंबा नन ऑफ द अबव तल द राइट आंसर हे जबो हमर सब बळे पीक रो पूर्वरु ही फ्यूज मेल्ट हे जाय. Then next question, let two fuse wire of same material having fuse current दीटा फ्यूज वायर अच्छी जो कि गोटे सेम मटेरियल गोटे 10 एम्पियर रो गोटे 5 एम्पियर रो तो पचार द 10 एम्पियर फ्यूज विल हैव 10 एम्पियर फ्यूज रो कौन थिबो ना स्मॉलर डायमीटर ना लार्जर डायमीटर ना द सेम डायमीटर एज 5 एम्पियर फ्यूज ना नन ऑफ द अबव. तल द राइट आंसर हे जिवो जोटा बड़ एम्पियर थिबो तार बड़ डायमीटर तेणु कटी हम राइट आंसर हे जिवो एटी larger diameter. The next question, in order to reduce voltage surge due to current chopping and capacitive current breaking, current chopping and current capacity breaking में we connect कौन करते a resistor across the contact of CB, an inductor across the contacts of CB, ना a capacitor across the contact of CB किंबा none of the above. तल the right answer कौन होगा एटी ताले कौन है वोल्टेज सोर्स को हम रिड्यूस करिया पे कौन करते गोटे रेजिस्टर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ ए सर्किट ब्रेकर जोटा ला ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज आर यूज्ड इन सर्किट वेयर फ्यूज हमर यूज करा जाय गोटे सर्किट रे केउठी जर्जी ऑप्शन देला फ्रीक्वेंट ऑपरेशन आर नॉट एक्सपेक्टेड, फ्रीक्वेंट ऑपरेशन आर एक्सपेक्टेड, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव. तो लेट द राइट आंसर हम कौन जो ऑप्शन है जो डेला फ्रीक्वेंट ऑपरेशन आर नॉट एक्सपेक्टेड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल्ट्स दैट imposes severest duty on the circuit breaker is तो ऑप्शन देला लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ना लाइन टू लाइन फॉल्ट ना टू लाइंस टू ग्राउंड फॉल्ट ना ऑल थ्री लाइंस शॉर्ट सर्किटेड. तो राइट आंसर है जो को जगह रे जो all three lines here are short circuited. The next question, the most efficient torque producing actuating structure for induction type relay is को type रे हमर यूज करा जाय saddle pole structure ना watt hour meter structure ना induction cup structure ना none of the above. तल the right answer हमर रेडी जो induction cup structure. Then next question, while using air blast circuit breaker, current chopping is the phenomenon often observed. तो हम air circuit breaker यूज करते हैं तो current chopping जो phenomenon
ऑब्जर्व करा जाए को कंडीशन में ऑप्शन देला ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज स्विच्ड ऑफ जो ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन रे थिबो आ स्विच्ड ऑफ थिबो किंबा हेवी लोड रे थिबो आ स्विच्ड ऑफ थिबो किंबा लॉन्ग ओवरहेड लाइन थिबो इज स्विच्ड ऑफ थिबो नन ऑफ द अबव तो राइट आंसर कोन हबो टेमरी जो ट्रांसफार्मर नो लोड थिबो आ से स्विच ऑफ भी थिबो then next question or resistance switching is normally restored in case of resistance switching हमर को केस रे रिस्टोर होते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ना लो ऑयल सर्किट ब्रेकर ना बॉल ऑयल सर्किट ब्रेकर ना ऑल टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर द राइट आंसर इज जो मन रखिए रेजिस्टेंस स्विचिंग हमर को केस रे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर केस रे then next question the operation of a fuse is based upon fuse रो operation mainly का ऊपर based है ऑप्शन देला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना नॉन ऑफ द अबव तो द राइट आंसर में कोन हो हीटिंग इफेक्ट ऊपर फ्यूज काम द नेक्स्ट क्वेश्चन A fuse in a motor circuit provides protection against का ऊपर से प्रोटेक्शन दे जो फ्यूज हमर मोटर सर्किट रे शॉर्ट सर्किट ना ओवरलोड ना ओपन सर्किट ना नन ऑफ द अबव तो राइट आंसर इज हमर शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन दे द नेक्स्ट क्वेश्चन ए फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन जो फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड कोथे थाए ना सीरीज रे ना पैरेलल रे ना सीरीज पैरेलल ना केमती तो राइट आंसर कोन होबे सब फ्यूज मन के फ्यूज हमरो सीरीज रे कनेक्ट थाए सर्किट रे द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूज नॉर्मली प्रोटेक्ट ए सिस्टम एग्नेस्ट का एग्नेस्ट हम फ्यूज मेनली प्रोटेक्ट करे ना अंडर करंट ना ओवर करंट ना रेजोनेंस ना लाइटिंग सर्जेस तल द राइट आंसर इज हमरो ओवर करंट केस रे हम फ्यूज प्रोटेक्ट करे नेक्स्ट क्वेश्चन एचआरसी फ्यूजेस प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन एग्नेस्ट का ऊपर लाइटिंग ना फायर ना स्पार्किंग ना शॉर्ट सर्किट एचआरसी फ्यूजेस हमरो मन रखिबे शॉर्ट सर्किट एग्नेस्ट बेस्ट प्रोटेक्शन करे The next question in HRC fuses the time between cutoff and final current is zero is called the कौन pre arcing time na arcing time na total operating time na none of the above the right answer is option B the next question the rating of a fuse is expressed in terms of फ्यूज हमर रेटिंग कोथ रे में करत वोल्ट रे ना वोल्ट एम्पियर ना VAR द राइट आंसर समस्त जानते फ्यूज को में एम्पियर रेटिंग करन द नेक्स्ट क्वेश्चन द इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इन ए सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड बाय का द्वारा थर्मोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना field emission of electrons na both A and B na none of the above the right answer हमर रेडी जो both A and B जो थ्रेल रोचे हमर thermonic emission of electron और field emission of electron the next question the contact resistance of a circuit breaker is about कितने माइक्रो ओम रो 20 ना 2 ना 20 ना 20 मिली ओम The right answer is already 20 micro ohm. The next question sparking occurs on switching of the load due to high circuit. So the skin effect na resistance na capacitance na inductance. The right answer it is inductance. The next question the arc voltage in a circuit breaker arc voltage गोटे circuit breaker कौन होची
is in phase with arc current, lags arc current by 90 degree, leads arc current by 90 degree, lags arc current by 180 degree. Right answer is the arc voltage in a circuit breaker mainly is in phase with arc current. It is option A. The next question. An interruption takes place in an oil circuit breaker when केତେବେଳେ interruption our oil circuit breaker takes place. Contacts move apart, na voltage goes through zero, na current goes through zero, na none of the above. So the right answer is current goes through zero. So zero an interruption takes place in an oil circuit breaker. The most dangerous fault in an alternator गोटे सब भयंकर fault गोटे alternator केउटा ऑप्शन देला फेल्युअर ऑफ फील्ड ना स्टार्टर वाइंडिंग फॉल्ट ना फेल्युअर ऑफ प्राइम मूवर ना अनबैलेंस लोडिंग. तो राइट आंसर एट इज हमरो स्टार्टर वाइंडिंग फॉल्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. When failure of prime mover takes place, the alternator कौन होगा से तो जितना prime mover takes place है से तो alternator हमरो कौन होगा runs as synchronous motor वाले चलिबो किंबा draws some current from the supply किंबा supply रो किछ current से draw करिवो किंबा is in the inverted running mode है जो किंबा all of the above. तो राइट आंसर एटी कौन होगा जितोला हमरो गोटे फेल्युअर हुए prime mover takes place लेबे इस तीन टांग कंडीशन होबो. उनका राइट आंसर हमर जो ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार्टर वाइंडिंग फॉल्ट इन ए अल्टरनेटर. सो इंपोर्टेंट स्टार्टर वाइंडिंग फॉल्ट कोटा हमर अल्टरनेटर केस रे फॉल्ट्स बिटवीन फेजेस एंड ग्राउंड किबा फॉल्ट्स बिटवीन फेजेस किबा इंटरटर्न फॉल्ट इन वन फेज किबा नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर है जो हमर ऑप्शन ए जोटा कि फॉल्ट बिटवीन फेज और ग्राउंड मध्य. The next question. The arc fault current is generally than the short circuit current. It goes arc fault mainly. Arc fault current is generally it is dash रहा था less than के greater than the short circuit current. ऑप्शन है less होबो ना more होबो ना equal to होबो ना none of the above. So मन रखियो arc fault is generally कौन होबो less than the short circuit current. The next question. Overheating of a transformer may be due to overheating ट्रांसफॉर्मर में भी क्यों कारण ना ओवरलोड ना शॉर्ट सर्किट ना फेल्युअर ऑफ कूलिंग सिस्टम. तो राइट आंसर है जो ओवरलोड हेले भी शॉर्ट सर्किट होबो शॉर्ट सर्किट हेले भी होबो ओवरहीटिंग होबो किंबा कूलिंग सिस्टम रे जदी फेल्युअर होला से केस रे भी ओवरहीटिंग हो. तो राइट आंसर है हमर जो ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन. In an alternator, relay protection is absolutely necessary against relay protection जो था क्या against ना over current ना field current ना starter winding fault ना none of the above. तो राइट आंसर है जो हमारा टी over current. The next question. Uchol's relay in an oil immersed transformer provides protection against क्या against है हमारा protect करे. ऑप्शन देला इंसुलेशन फेल्युअर ऑफ वाइंडिंग किंबा कोर हीटिंग किंबा फॉल ऑफ ऑयल लेवल. तेणु तो राइट आंसर है जो तीन टाइम केस रे तेणु करी हमर ऑप्शन डी द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Uchol's relay is ऑप्शन देला ए गैस एक्वेटेड रिले ना ऑयल एक्वेटेड रिले ना आइदर ए और बी किंबा नॉन ऑफ द अबव. द राइट आंसर है जो ऑप्शन ए जोटा गैस एक्वेटेड रिले. The next question. In case of slow developing fault in an alternator, so जो slow developing fault को थ्रू ना alternator है तो Uchol's relay कौन करियो sounds an alarm sound बाजिबो trips the circuit breaker
सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो किंबा बोथ ए एंड बी किंबा नन ऑफ द अबव तो द राइट आंसर कौन हो गोटे अलार्म बजिबो द नेक्स्ट क्वेश्चन if the starter winding fault is not cleared quickly जदि starter winding fault जदि clear quick जल्दी न हो जाए तले कौन हो it may lead to burning of starter coil जली जीवो किंबा burning and welding of the starter lamination किंबा damage to the other equipment को damage हो किंबा all of the above तले the right answer है जीवो हमर एटी ऑप्शन डी तीन टाइम केस रे हबो The next question, for the proper operation of a power system, the operating time of the relay should be हमारा proper protection by ଗୋଟେ power system case रे operating time relay रो mainly जो relay time थे से केते हवा दरकार 10 second less than 1 second more than 10 second रो अधिक होइतो दरकार किंबा none of the above the right answer is जो relay रो सबले मन रखिबे ଗୋଟେ second रो कम हेतिबा दरकार proper operation ପାଇଁ The next question, the bush bar protection means protection of bush bar protection ता माने कौन ऑप्शन है protection of bush bar रो करिवो ना isolating switch ना circuit breaker रो protection होबो ना all of the above तो the right answer है जे मोर bush bar रो भी करिवो से protection isolating switches रो भी protection करिवो आ circuit breaker रो भी protection करिवो तो राइट आंसर है जो ऑप्शन डी द नेक्स्ट क्वेश्चन द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ फॉर लो वोल्टेज सिस्टम इज आइसोलेटर हमर कम एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन कोद पे ना फॉर लो वोल्टेज सिस्टम पे कोडे आइसोलेटर ना ऑयल सर्किट ब्रेकर ना फ्यूज यूज करती ना एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर तो द राइट आंसर है जो हम थोड़ा कम भाव कम पैसा जोटा लगे हम से यूज करती समस्त घरे भी यूज हुए फ्यूज यूज करती लो वोल्टेज सिस्टम पे मत कमेंट करी कहिबे हाई वोल्टेज सिस्टम पे हम को प्रोटेक्शन यूज करती The next question, the number of pilot wires required for a protection of three-phase transmission line using translate system protection is केतटा तार थिबा दरकार दुईटा ना छटा ना तीनटा ना चारटा ताले मोर केतटा पायलट वायर रिक्वायर्ड हुए थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑप्शन हैला दुईटी The next question, as compared to station equipment example or the alternator transformer etc the chances of faults on overhead line are कम ना अधिक ना about the same ना none of the above chances हमर कोन रहबो कम रहबो ना अधिक ना सेम रहबो ना none of the above the right answer is जो अधिक रहबो the next question the ideal scheme of protection for overhead line is तो को scheme हमरा ideal for protection of overhead line पे ना time graded overcurrent protection ना distance protection ना differential protection ना none of the above the right answer is हमरा distance protection overhead line पे हमरा कोन यूज करिया distance protection it is ideal scheme The next question, the most serious voltage on the power system are those caused by का द्वारा हमरो insulation failure ना lighting ना resonance ना arcing ground तल the right answer है जो हमरो lighting पे The next question, the equipment used for protection of power system against lighting surges कोटा हम यूज कर जाए अर्थिंग स्क्रीन ना ओवरहेड ग्राउंड वायर ना लाइटनिंग अरेस्टर ना ऑल ऑफ द अबव तो राइट आंसर है जो हमरो ऑप्शन डी तीन टाइम का हम यूज करा जाए
The next question, the ground wire are placed dash the line of conductor. कंडक्टर कौन तले यूज करा जाए ग्राउंड वायर ना ऊपर ना मिडिल ना नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इज हमर एठी ऊपर above the line conductor. The next question, the ground wire protects the transmission line against. ground wire हमरो protect का ऊपर करे transmission line का against रे na direct lighting of strokes na indirect lighting stroke na both A and B na none of the above. So the right answer एठी हम कोन हो option A, direct lighting stroke against रे से protect करे. The next question, the surge diverter protects the station equipment against. क्या against? Direct lighting stroke, na traveling waves, both A and B, na none of the above. So the right answer right here हमर इजबो option ओके A जोटा रुचि direct lighting stroke सेथरे भी हबो plus traveling waves. The right answer हमर इट कोन इजो both A and B. Under normal operation, a lighting arrester conducts dash current to earth. ताल normal condition ने कौन नबो को current, heavy current ना moderate ना no ना none of the above. The right answer is what is no, option C. The next question, the transrelay scheme of protection of overall line is essentially a balance system. The dash पूर्ण misprint is it ରହିବ a dash balance system, current balance system na voltage na both A and B na none of the above. The transrelay scheme of protection of overall line is essentially for a current balance system and dash पूर्ण ରହିବ option A. The next question, Morse price circulating current principle is option देला more suitable for generator पे अधिक suitable ना transformer पे अधिक suitable ना equally suitable for both transformer और generator पे ना none of the above. The Morse price circulating current principle mainly का लगी suitable, more suitable of generator of case रे. The next question, the relay protection is not provided for overload in. relay protection system हमरो को केस overload करे हमरो provide करा जाना था generator केस रे ना transformer both A and B ना none of the above. The right answer is हमरो generator केस रे. The next question, a relay protection is generally not provided for small distribution transformer, a failure of alternator field, na overcurrent in the alternator, all of the above. The relay protection is not provided for tin tank case, small distribution transformer, failure of alternator field, or current in alternator. The right answer is option D. The next question, the over voltage in power system may be caused due to. क्यों कारण हमर ओवर वोल्टेज हमर पावर सिस्टम में मेन हे पर ना लाइटिंग ना ओपनिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर ना ग्राउंडिंग ऑफ ए कंडक्टर ना ऑल ऑफ द अबव. तल द राइट आंसर इज व्हाट कोन ऑल ऑफ द अबव. तीन टाइम केस रे हमर हे पर लाइटिंग केस रे ओवर वोल्टेज हे परबो किबा ओपनिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर किबा ग्राउंडिंग ऑफ ए कंडक्टर. The next question, resonance in the power system occurs when the inductive reactance of a circuit is dash capacitive reactance of the circuit. केतळ अधिक हेले ना इक्वल टू हेले ना समान हेले ना नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर कोन हो एठी केतळ हमर स्मॉलर हो.
ताले रेजोनेंस हमर केतळे होउची जेतळे इंडक्टिव रिएक्टेंस हमर कोन होउची स्मॉलर देन कैपेसिटी रिएक्टेंस टू सेतळे हमर रेजोनेंस होबो. The next question. In a power system, the resonance relay occurs at the supply frequency because the main कारण कौन सर्किट कैपेसिटेंस बड़ थिबो किंबा सर्किट कैपेसिटेंस कम थिबो किंबा सर्किट इंडक्टेंस स्मॉल थिबो किंबा नन ऑफ द अबव. तल द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जोटा रहबो हम सर्किट कैपेसिटेंस स्मॉल. The next question. Differential relays are used to protect the equipment against. Differential relay हमरो यूज करा जे मेनली का प्रोटेक्ट करे पे इक्विपमेंट रो ओवर करंट में ना रिवर्स करंट ना इंटरनल फॉल्ट ना नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज हमरो इंटरनल फॉल्ट में हम डिफरेंशियल रिले यूज करते. The next question. A directional overcurrent protection consists of. जो डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन कौन कंसिस्ट करे ना ओवर करंट रिले ओनली ना पावर डायरेक्शनल रिले ओनली ना बोथ ए एंड बी इन ए सिंगल रिले केसिंग गोटे सिंगल रिले केसिंग दिटा थिबो किंबा नन ऑफ द अबव. तो द राइट आंसर इज वेटी ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओवरहेड लाइंस कैन बी प्रोटेक्टेड बाय. ओवरहेड लाइन केमिति प्रोटेक्ट कर परिबा इंस्टैंटेनियस करंट ओवर करंट रिले ना इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले ना डायरेक्शनल ओवर करंट रिले ना ऑल ऑफ द अबव. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इन प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर ना प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ना बस जोन प्रोटेक्शन ना all of the above. The right answer is our differential protection जो principle which is employed for तीन टांगों पे protection alternator पाई transformer पाई और bus zone protection पाई. The right answer is what all of the above. The next question. For the protection of arcing ground we use ऑप्शन देला पेटरसन कॉइल, ऑप्शन बी देला ग्राउंड वेयर, ऑप्शन सी देला लाइटिंग अरेस्टेटर किंबा नन ऑफ द अबव. तो द राइट आंसर एटी पिलाने कोन हो त कमेंट करी कहिबे. द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक यूज ग्राउंड वेयर ना लाइटिंग अरेस्टेटर ना बोथ ए एंड बी ना नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन. For protection against low voltage, high frequency oscillation, कौन हमें यूज करती कैपेसिटर्स ना सर्ज ऑब्जर्वर्स ना आइदर ए और बी ना नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज दिटांगर कौन सी गोटे यूज कर आइदर कैपेसिटर ना सर्ज ऑब्जर्वर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन. पल्स रिले Buchholz relay is which a gas acouted relay na used on is oil immersed transformer na connected between main tank and conservators na all of the above. So the right answer is कौन होगा? It is a gas acouted relay. The next question. Distance protection scheme is used for the protection of. जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम हम यूज करे मेनली का अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे अल्टरनेटर ना ट्रांसफार्मर ना ओवरहेड लाइन ना नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज हमरा ओवरहेड लाइन केस हम यूज करा जाए. द नेक्स्ट क्वेश्चन. The more price calculating current scheme is uneconomical. Uneconomical को कैसे for the protection of overhead line ना alternator ना transformer ना none of the above. सेटा हमर देखंतु more price calculation current scheme mainly uneconomical. हमर मेन केस हैला तार overhead line
Right answer is option A. The next question, for the protection of power system against traveling wave रे against रे हमरो protection ପାଇଁ हम कौन यूज करନ୍ତି? Earthing screens, ना surge diverters, ना overhead ground wires, ना none of the above. सब मन रखिए हमरो traveling wave case रे हमरो protection ପାଇଁ हम surge diverters यूज करନ୍ତି. The next question, the earthing screen provides protection against. Earthing screen क्या against हम protection दे? Option देला indirect lighting stroke, ना short circuit, ना direct lighting stroke, ना none of the above. ताले earthing screen हमर mainly protection क्या against रे दबो? Direct lighting strokes against रे दबो. ताले option C. Cases of fault occurs on a transformer are very rare because they are कुछ हमारा fault mainly कुछ हमारा जो fault हुए transformer केस रे mainly rarely तर main कारण कौन? Because they are static device, not totally enclosed, not generally oil immersed, not all of the above. then the right answer is what is static device मान भी totally enclosed or generally oil immersed. तेन करी हमारा ये option D all of the above. ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି କି ରେୟାରଲି ସେଥିରେ ଫଲ୍ଟ ହୁଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା. The next question, the automatic relay protection is generally not provided for the following alternator fault. ତାହେଲେ ଆମର automatic relay protection mainly provide କାହା ଲାଗି କରାଯାଇନଥାଏ? क्यों fault ପାଇଁ? Option देला failure of feed, ना over speed, ना over current, ना all of the above. ताले the right answer is option D तीन टांगो केस में. The next question, differential system of transformer protection provides protection against earth fault only, na phase fault only, na both A and B, na none of the above. The right answer is option C both A and B. Next, a source diverter should be located the apparatus to be protected close to, not far away from, na in the middle of, na none of the above. ताले हम source जो divider mainly located करा जाए कोठी? Option है close to. The next question, for the successful working of a ground wire, the footing resistance of the tower should be infinite, na very high, na low, na none of the above. The right answer is low. The next question, the internal cause of overvoltage in a power system, mainly internal cause जो हुए overvoltage पर power system कोठी? switches, ना insulation failure ପାଇଁ हुए, ना arcing ground ପାଇଁ हुए, ना all of the above. The right answer is all of the above. तीन टांगो switch surge ପାଇଁ, insulation failure ପାଇଁ और arcing ground ପାଇଁ. The next question, in power system the protective device provided against over voltage mainly take care of कार नवा ପାଇଁ जो power system रे हमर mainly protecting device provide करा जाए mainly कार take care ପାଇଁ का को माने ये रखिया ପାଇଁ ठीक ठाक रखिया ପାଇଁ insulation failure को ना resonance को ना lighting source को ना none of the right answer जो lighting source ପାଇଁ सेति में हमर mainly lighting source को हमरा protect करिया ପାଇଁ. The next question, internal cause of overvoltage in a power system may be due to क्या लगे हम opening a loaded line ପାଇଁ ना closing a unloaded line ପାଇଁ ना insulation failure ना all of the above. The right answer is all of the above. The next question, balanced earth fault protection is generally provided for
earthfall protection mainly balance earthfall protection का लगे हम प्रोवाइड करा जाए mainly small size alternator पे ना medium size alternator पे ना large size alternator पे ना none of the above right answer is हमारा small size alternator पे हमारा balance earthfall protection generally provide करा जाए। Then next question, the schemes of protection for transformer depends upon क्या ऊपर size of transformer, the nature of load supplied, na importance of service required, na all of the above. The right answer is option D, all of the above. The next question, the amount of damage to the equipment due to voltage surge depends upon क्या ऊपर mainly depend करे the amplitude of surge, na the stiffness of its wave front, na both A and B, na none of the above. The right answer is option C. The next question, as compared to negatively charged clouds, the number of lightning strokes due to positively charged cloud, which as compared तुलना क्या तुलना negative charged cloud तुलना रे हमारा positively charged cloud अधिक होबो ना कम होबो समान रहइबो ना none of the above. The right answer is बेटे हमारा कम रहइबो। The next question, merge price protection is a type of option distance protection, differential protection, both A and B, none of the above. Then the right answer is differential protection. The next question, the impedance relaying scheme is used for the protection of का protection पे यूज करेंगे transmission line impedance alternator, a transformer, a boost bar. Tell the right answer is already transmission line. The next question, in case of electromechanical relay coil is normally designed for हमारा जो मेन केस रहला इलेक्ट्रोमेकानिकल रिले हमर रिले जो कॉइल यूज करा जाए नॉर्मली डिजाइन फॉर केते एम्पियर केते एम्पियर 5 to 10 एम्पियर 1 to 5 एम्पियर ना 10 to 25 एम्पियर ना 50 to 100 एम्पियर ता डिजाइन मेनली हमर 1 ରୁ 5 एम्पियर पे करा जाय था इलेक्ट्रोमेकानिकल रिले जो कॉइल ता मेनली हमर कहते 1 ରୁ 5 एम्पियर पे। The next है backup protection function when केतବେଳେ तो backup protection हमारा काम करे केतବେଳେ हमर मेनली प्राइमरी प्रोटेक्शन जेतବେଳେ फेल हे जिवो ना सेकेंडरी प्रोटेक्शन फेल हेले ना बोथ ए एंड बी ना नन ऑफ द अबव जेतବେଳେ प्राइम त राइट आंसर हे जिवो जेतବେଳେ प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल कले सेतବେଳେ हमर बैकअप प्रोटेक्शन स्टार्ट हो। The next question, which of the following is the protective device against lighting over voltage? तो निम्नलिखित मध्य केउटा गोटे प्रोटेक्टिव डिवाइस जे हमर लाइटिंग ओवर वोल्टेज ऊपर से प्रोटेक्ट करे रॉड गैप्स ना सर्ज ऑब्जर्वर ना हॉर्न गैप्स ना ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज तीन टांग तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, lighting is a huge spark caused by electrical discharge taking place between तो lighting हमर केतळ हुए तो electrical discharge का भीतर दिटा मारेले जो हम देखते जो बिजली जो मारे cloud ना the same cloud ना cloud and earth ना any of the above। राइट आंसर बादल बादल भीतर हेले भी परिबो किंबा सेम क्लाउड भीतर हेले परिबो किंबा क्लाउड और अर्थ भीतर भी हेले तो राइट आंसर हम जो एनी ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन, overhead ground wires are used for protection a transmission line against overhead ground wire mainly क्या पे हम यूज करते protection against line to ground fault, arcing arc, na voltage short due to direct lighting stroke, na high voltage oscillation due to switching।
The right answer is option C. Overhead ground wires mainly use kara jaye protection against protect the transmission line no against रे हमरो mainly voltage surge due to direct lighting strokes. The next question, the overvoltage surge is provided the overvoltage surge in a power system may be caused by lighting, resonance, switching, all of the above. So the right answer is all of the above. The next question, location of a lighting arrestor near का पाखरे यूज करे ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, ना बुश बार, ना सर्किट ब्रेकर. The right answer is transformer. The next question, by button of relay we generally mean current rating of relay, na volt ampere rating of relay, na voltage rating of relay, na watt rating of relay. The right answer is volt ampere rating of relay. Okay friends, आज में इतनी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्लास रे मैं न्यू टॉपिक रो क्वेश्चन डिस्कशन करिबा. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ऑल्सो पढंतु, प्रिपेयर करंतु.